I think even if we lose our next 10 matches like this on it straight up, I still don't think so he's getting sacked. Because still they'll have the end PR yahi aayega from all these people who support Ten Hag, from the board or anything. Okay, let's say sack him. Tell us what is the option. Like, first of all, it is not our job to tell you what is the option, right? You should have an option. जब तुम इतना समर में इतना बड़ा रिव्यू किया तुमने इसका, you waited and you did all of that. तब तुमने क्या डिसीजन मेकिंग किया? क्या तब तुमने एक अपना सेकंड बैकअप प्लान नहीं बनाया? Did you not assume this could be the start of the season? तो हम क्या करेंगे? कल के मतलब मैच के बाद अगर व्हेन यू सी व्हाट बार्सिलोना वाज डूइंग एंड देन यू रियलाइज के हांसी फ्लिक लास्ट पूरा सीजन तुम्हारे लिए अवेलेबल था एंड यू कुडंट गेट हिम। मतलब जैसे बोलते हैं ना, लाइक यूनाइटेड हैड 2-3 चांसेस, दे कुड हैव रिवाइव्ड देमसेल्व्स, राइट? दिस वाज द आई थिंक दिस वाज द लास्ट चांस, टू बी वेरी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। I don't see ourselves coming back. This would be AC Milan. I mean, I'm not sure how many, Yeah. who has followed AC Milan or Italian Yes. football. Like when I was growing up, we used to go and play football, this PES and all, and their Juventus used to be the prime team. Okay, and then you Hmm. got Seedorf and all playing in AC Milan, and same thing happened. Owners changed. Milan is not a poor club. It's in Milan. It's fashion capital of the world, for that matter of fact. And then all of a sudden they started losing big time, right? And today's match goes to show you that जब हमने Ten Hag को छोड़ा, we lost Ten Hag. We are again in that boat now where we're just done. We're just done for everything. आप किसको लाओगे? People talk about, and the irony is people अभी still तो want to सबसे talk ज्यादा about linked is Xavi. Javi. And again, Javi was not a great coach at Barca. He was okay. Only good thing Javi did, you got to appreciate is, उसने बार्सिलोना को रियलाइज कराया कि बॉस, योर रूट्स आर यंगस्टर्स, राइट? गो बैक टू ला मासिया, ब्रिंग योर प्लेयर्स इन, एंड थैंकफुली दे डिड। एंड अभी आप उसको यूनाइटेड में लाके उससे क्या करवाओगे? डू यू थिंक यू इवन हैव 1% प्लेयर हु कैन प्ले दैट सॉर्ट ऑफ टिकी टाका फुटबॉल विद जावी नोस? उसने पूरी टिकी लाइफ यही टाका किया है। यार अभी आई डोंट I mean, anyone who comes, I don't think for any player. First of all, तो एक ये हम जो loop में है, right? Of every 3 years, it's a process. Someone comes in, and but when you see other clubs, उधर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है. नहीं No हो रहा one है। is coming out. It's a process. This is what happens. That is कोई ऐसा नहीं. सब आ रहे हैं. Everyone is making. ये भाई ये क्या है? Ange. He has made an impact in Spurs. Last season also Spurs played well. यार मैं Spurs बोल was रहा हूँ, तू not a जीत मत disaster last कुछ, season. तू जीत मत कुछ, पर ढंग का तो खिला भाई। यार इंटेंट दिखा, जीतने हाँ, का इंटेंट इंटेंट तो दिखा। दिखा। And उसके बाद ऐसे रबिश कमेंट्स तो मत दे. You you live in a delusional एकदम thought process and then you make your fans also like that. And पूरा इकोसिस्टम ही अभी तो ये जो टेनाग है उसके अराउंड का है कि भाई हम पता नहीं क्या अचीव करने वाले. यार ये एक सबसे एक सबसे प्रोटेक्टेड बंदा है ये, सबसे एक प्रोटेक्टेड। ट्वीट आया है, ब्यूटीफुल ट्वीट। उस बंदे ने ये एरिक टेन एरिक हाग की टेना. बेटी और माँ की बीवी की फोटो डाली है, और लिखता है, ये देखो इन दोनों मासूमों को देखो, तुम इसकी नौकरी ले लोगे तो ये इन बेचारा इनको कैसे खाना खिलाएगा। और 15 मिलियन मिलने वाले 17 मिलियन मिलने वाले उसको. वो आदमी उसी का वेट कर रहे हैं. वो और कुछ नहीं वेट कर रहे हैं अभी. अभी देखो, आई टोल्ड यू राइट, आई टोल्ड यू अबाउट दिस। अभी पूरा, इफ यू लुक एट द होल, आई आई होल जो टीएल, टेना खेल रहे हैं वो भी यही आ रहे. इट वॉज नॉट अ पेनल्टी और पूरा सिर्फ. हाँ, हाँ. but that is not the point. Point is your team played stupid football in the second half. Your players, no one is talking about what Dalot did, no one is talking about what Garnacho did, and no one is talking about what भाई Rashford did nothing. तुम कुछ भी अरे नहीं। बट यू ऑल्सो नीड टू टॉक नो हाउ you play a first half like this, and after that your manager sees a टीम tactic, टॉक, टीम टॉक। and then the team really drops off. आकाश, फॉर वियर्ड रीजन तेरे ऐसा लग रहा है कि नकली आईब्रोज बन गए। तो एंगल सही कर। पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. बट ठीक है. वो ऐसे बड़े बड़े एंगल, स्नैपचैट फिल्टर आता है। पता है. अच्छा. चलो, ले लो. आर्टेटा को इकलौती चीज जो सीखनी चाहिए कि साइन कैसे करते हैं प्लेयर्स, हाँ, कौन से प्लेयर्स साइन करते हैं। मतलब दूसरे क्लब्स पे जाके तुम गिफ्ट नहीं लेके आते हो कि ये लो, विल सेव यू। सॉरी ट्रांसफर आदित्य। ट्रांसफर मार्केट का यूनाइटेड का एक बहुत बढ़िया पॉलिसी है
पिछले 10 साल से नोटिस करता आ रहा हूँ. So let's start from the time KDB was signed by Manchester City, right? So before that, KDB was at Chelsea and Chelsea से फिर वुल्सबर्ग गया. वुल्सबर्ग में उसने 17 गोल 18 असिस्ट मारे थे. I used to follow that game because there was this one player who was creating, a lot of riffle, whatever you call it, and उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वो बहुत ज्यादा यूनाइटेड से लिंक था. फिर वो केडीबी यूनाइटेड से लिंक्ड हुआ 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 एक सीजन 1.5 सीजन सिटी गया. फिर उसके बाद और प्लेयर आए, सिटी गए, लिवरपूल गए, चेल्सी गए, फिर से यूनाइटेड से लिंक हो रहे. सो एनी इमर्जिंग टैलेंट और एनी गुड प्लेयर हु इज लिंक्ड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड विल एंड अप एट मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल और गुंडोगान चेल्सी. गुंडोगान इज गुंडोगन भाई, वो बचपन का यूनाइटेड फैन है. ही इज अ चाइल्डहुड यूनाइटेड सपोर्टर. उसके Cole पहले के Palmer, ट्वीट्स है वेयर ही हैज गॉन मैनचेस्टर सिटी वर्सेस यूनाइटेड एंड ही हैज सपोर्टेड ऑल आउट यूनाइटेड. Cole Palmer is a United fan. But like, there is also one more thing with United. तुम ये सेम सेट ऑफ प्लेयर्स को जब तुम उनके कंट्री के लिए खेलते हुए देखोगे, दे आर 10x बेटर. Because एवरी you're सिंगल वन asking ऑफ them to देम. do what they know how to do, right? आप उनसे वो करवा रहे, like, to be very frank, with all due respect to Bruno Fernandes and whatever he has done, till the time we don't get rid of him, हमारा कुछ नहीं होने वाला. पार्थ भाई, again mute up. You If you're just speaking. हाँ, उसने सुना भी नहीं, आई थिंक. मुझे लगता है चाय आइडियली से बनाने गया होगा. वो कुछ कर रहे हैं. नहीं बट नहीं यार, यू नीड टू गेट रिड ऑफ राश, यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट कोर प्लेयर्स who have been part of this whole problem, whole process. That is Luke Shaw, that is your Rashford, Bruno now. Get rid of them, or at least, like, if there are 4 5 players like that, get rid of the three main players and make a statement that this club is not going to settle for mediocrity. By longing Eric Ten Hag at this moment, you're also giving out a statement that you are okay with this happening, you're okay with being 14th 15th on the table. And I don't know, man. I don't think that it is At this about point, Glazers would have also sacked him if only they would Glazers have, would have been and in charge. 100% they would have sacked, but that is where these guys are trying to prove कि हम लोग, we are the smarter ones. We don't take panic decisions. और गौतम गंभीर की लैंग्वेज में, we don't decide the 11 by social media. So they are trying to do the same. कि social media पे pressure है, that doesn't mean we'll sack him. But you kept him in the job also because of social media pressure. Social media, yes. ठीक है, और कुछ नहीं था लास्ट सीजन. तुम एक एफए कप जीतने पे तुमने उसको जॉब दे दी. क्या तुमने रिव्यू किया भगवान जाने. क्या तुम्हारा लाइक सीरियसली, मतलब भाई मेरे को चाहिए जो मेरा ऐसा रिव्यू करे और मेरे को उसके बाद मेरे को हाइक देवे. 33 पॉइंट्स बिहाइंड लीग लीडर्स एट द एंड ऑफ द सीजन फिनिश किए हम. ठीक है. और जिस तरह से हमने शुरू किया था ना, वो देख के ही मैंने बोल दिया था कि इस साल पहली 10 मैच के बाद हम 15 पॉइंट पीछे होंगे लीग लीडर से, और वो होने ही वाला है. Because next match we are playing Chelsea, and I think that is also something that we are going to lose if it's going Of to be course, English. of course. Now, one more thing I have is, ये क्या फंडामेंटल है. तुमने मोरिनियो को 7 ड्रॉ निकालने की वजह, लॉस नहीं, ठीक है, 7 ड्रॉ निकालने की वजह से सैक किया था. ओके, एट द लेट्स से 1/3 सीजन हुआ था तब. अभी इस बंदे ने 5 ड्रॉ 5 लॉस निकाल लिए 14 गेम के अंदर इन ऑल कॉम्पिटिशंस. भाई क्या, 5 ड्रॉ 5 लॉस, भाई कोई सेंस बनता है? दिस इज मोर देन 50%, दिस इज 70-80% जितना. तो भाई ये सिर्फ ड्रॉ और लॉस निकाल रहे हैं. हम 3 जीते हैं सिर्फ सीजन शुरू होने से, इतनी सारी गेम खेलने के बाद. मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस. इफ ही हैज टू बी सैक्ड, इट हैज टू बी राइट नाउ. इट कैन नॉट बी It लाइक was विंटर तक वेट yesterday करते when he हैं. was और supposed to be sacked. ठीक है, तुमने तब भी नहीं किया उसको. Is it coming my background the way I wanted it to come or no? No, it's not. It's not. What does it say? I support Arsenal. No, that is not what it is. But I don't think so. He's getting sacked, and the reasoning is going to be simple enough. हर बार जो अभी continuous अभी चलता आ रहा है, there is no one better, there is no one better, and we are gonna be fed with the same thing, like who you replace him with and blah blah shit. But yeah, and then that is all it's gonna happen. Nothing else is happening. Yeah, जिंदगी बन गई है भाई हमारी.
let's switch our attention to like good matches, okay? Good teams. I think, but I honestly think, with all due respect to Arsenal, I like the way they are playing. But आज मुझे लगता है कि Liverpool is going to give it left, right, center. होम किसका है? आर्सेनल आर्सेनल होम है? Emirates, yeah. Mhm. फिर तो मुझे लगता है आर्सेनल मे बी 2-1 3-1. I'll kind of give it to Arsenal for this because one thing I have I seen feel them it play will be a City. draw. I've seen them play City and I felt कि अगर वो रेड कार्ड वाला सीन नहीं होता तो आर्सेनल would have like killed them. Agreed, ठीक agreed, है? agreed. Yeah, that तो part I agree. considering the fact कि one thing I have noticed about them is कि उनका intent is attack in packs and defend in packs. वो चढ़ के खेलते हैं एकदम एकदम चढ़ के खेलते हैं. So one वो चीज है ना, अगर लिवरपूल की भी सोची जाए या आर्सेनल की भी सोची जाए, it could be on a similar scale, but I still feel Arsenal is maybe just a little bit ahead अभी उस सारी चीजों में कंपैरिजन में, but let's see. किक ऑफ टाइम क्या है? I think in In next 7 7 minutes. minutes. 7 minutes. Okay, I'll just be back. Yeah. Okay. So guys, what's your prediction for the 2-2. for the match? Like draw. That is what I'm predicting. Dushan? Liverpool 3-1. I'm going for Arsenal 3-2. Oh, Who do you think will be the man of Yeah. the match for you guys? I think it would be Martinelli. Martinelli. Yeah, I mean it's an odd shout, but the reason being that against Liverpool, he always brings his best, which is I think it's a mentality thing with him. Like he thinks with when it comes to bigger teams, he wants to perform, he wants to show uh, the value he can add. उसका hype खराब गायब हो गया ना, but like the way he started this that Martinelli this it all died down soon. I think so. The first season was under Unai Emery, right? He signed him. So then he scored 10 goals across all competitions. Pretty good. He's only 18 years old or something. And then he had a terrible injury. He comes back. Arteta's there. Last to last season, he scored, I think he was a top scorer with 15 or something in Premier League. And him and Saka were like carrying the team in attack. That's what it seemed like. And then last season, I think he hit a rough spot, patch again. So let's see how it goes today. I think he started the season better than last season, I would say. Yeah, we can say that. अभी The कौन सा one, match? the The one which you guys lost, Brentford, na? Bournemouth. the one, oh yeah, I Bournemouth. think Yeah, we in lost that that match he missed some really good chances, which he should have scored. And Yeah, like I think we. you Mhm. would want him to pick up when you don't have like Odegaard and Saka in the team. You would want him to be like your main man and really drive, which I think he has failed in order to do that. But एक study होना Uh, चाहिए, you know, all like look, this whole batch, like people used to compare Martinelli a lot with Rashford, you know, all these guys, all this, especially this Premier League guys, Sterling as well. There is this core issue when it comes to finishing. Mm. You look at all of them, somehow they never broke that ceiling. Right. And that's just kind of weird because you have all these great coaches across the board, but Yeah. none of them really made them, you know, took them to the next level. Up, be no matter what people say about Ronaldo, but right, but he played like, of course, there was a lot of his efforts which got him there. Unlike Messi, who was just naturally gifted. Right? Of course, not that he didn't work hard, but there was that gift. अब इनका एफर्ट का कमी है और द कोचेस आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट बिकॉज रैशफोर्ड राइट आज कोई कुछ भी बोले इन फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म बट व्हाट 19-year-old Rashford was doing that it is the exact same thing which the 28-year-old Rashford is doing even in good form right in fact 19-year-old वाले को तो हेडर्स मारना आता था
this guy does not know headers. Irony is Rashford ne apna mark, he made his mark against Arsenal and both the goals were by his head. Right? Yeah. I remember. And now he cannot do anything with his head. And that's just kind of weird, the way the trajectory. And I think I fear the same for Garnacho. कि भाई हम आए हैं, we are here, we'll rock it. But then पिछले 2 साल में what is the improvement? कुछ भी नहीं है. आप Vinicius, everyone said it is over. I mean, I don't think I modern think football times में any footballer apart from this racism and all, वो सब मुझे काफी नौटंकी भी लगता है एक हद तक. But apart from that, if you look at player level पे, no player has been told, in a team that do not pass the ball to him. I mean, that's just absurd. And it comes out, maybe internally there would have been discussions, but this was all over the world. And Benzema did not say कि नहीं मैंने नहीं बोला. No one came out and said नहीं हमने बोला. It was all And there. after that, they moved on from it. It was not made कि They हाँ भाई moved बहुत on. बड़ा पंगा हो गया, there is Exactly. a rift or anything like that. And you yeah. look at Vinicius today and But you're like, भाई क्या कर दिया भाई, क्या हो गया? Like, what did Ancelotti do with it? Right. I think when it comes to Rashford, I wouldn't put Martinelli in the same bracket, but when it comes to Rashford or Garnacho, and not because they are United players, but because they come from that academy, Garnacho's an academy player, right? For you guys? He was Yeah. signed from Atletico Madrid's academy to ours academy. 14 years, but that was too young. मतलब इतना भी we didn't keep him 14, 15 Yeah. तक. So if you see Ronaldo, compare him to Ronaldo, I think that's even I was like, Garnacho needs to have the right coaches, but also the background. Like Ronaldo came from such a humble background, right? And everything. And you see any player who comes from the academy, whether it's yours or ours, I think what they're doing is that they create that hype for themselves as well. Also, the social media does it. And I thought that this guy would take after Ronaldo, Rashford, because they have very similar sort of shooting ability, if you want to say, like when you see long range shots and Body language. everything, running, body language. Although, of course, now that's no longer the case. But when they started, right, when he started, I was like, oh, this guy is going to now kill us again. Like this one more player from United is going to keep scoring. And he kept scoring against us. But then at the same time, he did not improve, as you said. And that I think, uh, to do with two things. One is, of course, coaches. The other one is, your background. Because I think, and that Ronaldo had to keep improving. Because I still remember when Ronaldo came, I wasn't a fan. And by the way, I'm a huge, like, I think he's the best player for me. Ronaldo is the best player in history for me, All three of us. personally. All three Yeah. of us here. And I'm an Arsenal fan, so for me to say that the person who scored so many against us is the best player, like, I'm being genuine there. My favorite player is Henry, of course, but the best player for me is Favorite Ronaldo. player is? Henry, Thierry Okay. Henry, of course, yeah. But the best player, so best player are like, and favorite player is different, right? So that way, and that's why I feel the reason being that when he started in United, I think everyone was like, oh, this kid is not, we used to think, oh, he's just It's doing okay. unnecessary step overs and everything. I Anthony, used to say, But yeah, pata hai, and what you're saying, no, you're missing like a very important point over here. What you said about Ronaldo's background and all of it took the point, and that tends to happen. But Ronaldo was like coaches also. But the other thing was Ronaldo was in a team where he had players who had good discipline in them, kicked his butt, and नहीं asked him to यार, play better, ऐसा होता which तो is फिर a नानी very भी वो बन important thing. जाता ना. ऐसा why did No, नानी no, go through? but it was but important. He took that advice. No, whatever advice was given to him by his yeah, seniors, and that is what he has pointed out many a times when he was with United. That I always free. looked up at all of them, and learned from Roy Keane's gigs and all of them. Which these players, first of all, that they don't have any good advice only around them. Mm, But even if we consider some of them like Rashford, when he started, they were still like the players he had played with. Okay, he started when there was Rooney in the team.
इफ यू लुक एट अभी का ही हाल देख लेना, अभी का तो जो रोनाल्डो ईरा आया, राइट, he's रोनाल्डो, let's just be real, he is रोनाल्डो, he's no, मतलब if you compare the ability and the mindset, तो टेनहैग और उसका कोई मुकाबला ही नहीं है, ठीक है, right? Imagine Yeah. this, that when he fought against him and he said a lot of right things, okay, a lot of right things he said about the club, where the club was heading, the type of football the club was playing, the kind of response the players were giving, and ठीक है उसने तो बोला, now people will say कि वो तो अपने मुंह से अपनी तारीफ ही करेगा, but all the coaches, all the ex coaches who left United, none of them said कि he was in the wrong, he was always the right one, right? Yeah. And when he left, अगर if it was, for imagine this, कि अगर जेरार्ड को कोई प्लेयर आके या लेम्पार्ड को कोई कोच आके कुछ बोला, राइट, तो इट इज होल टीम अगेंस्ट दैट कोच, we won't take shit for Lampard, we won't take shit for Gerrard. Like example, David Moyes at United, when he said something to Vidic, the whole backline was कि तू Vidic को बोल रहा है कि तू जगिया का वीडियो देख, Moyes तू पागल हो गया क्या, like what are you comparing, right? And then Evra and all just left it, Ferdinand and all, they were like shit, get lost, we are not dealing with you. And this time when he did, Ronaldo did, none of the players, including Bruno, right? Bruno was also like, no, no, Ronaldo is in the wrong. Why? Because you got a coach who's letting you do the shit you want, and तुमको जो बंदा improve करने को बोल रहा है, you don't want him around. I don't want. I'm going to office at 8. That is my call time. But there is this guy who's coming at 7 and working extra, who's twice my age. Why won't I? Why should I do it? Greenwood, like I look at Greenwood and what he's doing currently at Martial, and I'm like, भाई, मतलब अगर पूरा crop देखेंगे, he's still the better one, and it's just unfortunate. Miles above, currently, if I see, is miles above where Garnacho is. He's miles above where this guy is, Rashford is. And Rashford is, yeah. मैं तो मतलब रैशफोर्ड को ऑलरेडी, गर्नाचो को माइल्स अबव गिनता हूँ रैशफोर्ड के, तो दैट तो आई वुडंट से ओनली एनीथिंग ऑन दैट. अभी बेचारा कोबी मानू, पानी भर के आ रहा हूँ. कोबी मानू अगेन सच अ हाई स्किल्ड प्लेयर, मतलब उसका स्किल, but these people will rule him. Yeah. I think Menu, before he gets that awareness, well, he's aware, but before he gets too ahead of himself, he needs that coach behind him and that players behind him. That look, you're not everything yet. Correct. If that guy goes to Pep, I mean, the flicks, the flair he has shown, the control he has shown at his age. Like being winger is one thing, but being midfielder is completely different ball game. And the kind of composure he has shown, Obi, उसके बाद you want him under a good coach. 100%. वो उसका सीलिंग बहुत हाई है. He can be the next Scholes, he can be the next Zidane. Like उसके पास वो लेवल है. Currently, looks like उसके पास वो head भी है. Like Lingard, okay, what the hell is going on between Van Dijk and this fellow? No idea, man. This one thing I actually really like. Van Dijk खाली kick कर रहा है यार. Come on. But even this guy was messing around with him. No, he was messing around, but if you see, like there's no need to kick. I hate when people. When no red players... cards, yaar. No red cards, yaar, in this game. Come on, yaar. No red cards. No. Yeah, we don't want any red cards. But this flopping around of players, I hate that. By the way, like even Havertz doesn't have to just fall over like that. वो football तो कब से बंद हो गया यार. Yeah, wait. Football is no longer a gentleman's game. It is boys' game. Literally, people. कौन था? I think Mourinho made that comment कि हमारी, like back then 18-19 you had men. Now at 20-29 you have kids. He made that for John Terry and Lampard. He made that comment. He made it after going from United, and that was in reference to Rashford and all these guys, Pogba and all. Oh. Will he go to City? कभी ऐसा नहीं लगता कि आर्टेटा tries to look like a genius. कि मैं टाइटली ऐसा सोचता हूँ कि क्या होने वाला है. नहीं रे, वो मिडफील्डर भी ऐसा ही था. When he was a midfielder, he was like that too.
Yeah. Akash has this personal grudge against Arteta, you know. I I I've don't just know never for seen what. I've never seen Arteta in as a player also कि उसका शर्ट खराब तरीके से tucked in है. Yeah. उसकी He, सालों से यही हेयर स्टाइल है. He's in this hairstyle wait. since ages. Yeah, exactly. And I actually admired him as a player when he was at Everton, more than at Arsenal, because he was single-handedly like creating chances, and True, I think true. his yeah. free kick ability was really good as well. But will he go to City? Do you think he'll go to City? I hope not, but there are signs, man. I don't think so. He'll leave until Arsenal asks him to leave. I think he has too much love for Arsenal. अगर I आप don't think it's पैसे भी about अपने love, but it's about Arsenal, the way they The have stuck with setup, him. yeah, मतलब it's बट the ये भी setup. तो ना कि ये सेटअप भी तो उसी ने किया है ना आर्सेनल को ही हैज But लिटरली बीन पहले गिवन सीजन में उसने पहले 2-3 सीजन में क्या ही कर रहा था वो. I बट feel उसने उसको दिया ना यार ओबियोंग निकालने हाँ दिया मैं वही बोल रहा हूँ मैं. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आर्सेनल ने उसको बहुत ज्यादा बैक किया. उसके बाद इफ ही चीट्स ऑन देम like दैट वुड बी बैड. ओह गुड ब्लॉक दैट कौन वाज था ये? बेन वाइट. हाँ आई थिंक बेन वाइट. yeah, Saliba's out now, so that's a big miss. But has Saka dropped this season or is it just me but I just no, don't he's think actually no, he's been really good. He's the top assist पर player. मेरे Like को he has top मतलब assists for असिस्ट और this. गोल्स इफ यू एक्चुअली सी तो वो इतना मतलब ऐसा कुछ क्वालिटी नहीं है उसमें you know it's just that everything goes what I mean is everything goes through him right so eventually you will have that Mhm. मतलब who am I to judge any winger चलो आया shut my mouth goal goal No, भाई. bye साहब he's in my FPL Saka. bye that भाई was मैंने a इसको निकाल great दिया था he लास्ट. had to he had to come back. हाँ क्या बोल रहे? Sorry. great goal very good goal like after watching किसका बॉल था लेकिन? Garnacho Who do this for 90 minutes was and it? not Was it scoring White? pass मतलब नॉट आकाश भाई सेइंग कि साका इज लाइक अ मीडियोकर प्लेयर और फिर दूसरे ही सेकंड पे उसने ऐसे ठोक सही दिया. में यार मतलब दूसरे ही सेकंड नहीं Ben I White. was not saying he's a mediocre player what I meant is इस season but of course I was totally wrong See, No, but again at the same time जो हम शूटिंग का बात कर रहे थे and I had told this to mm, Akash also before कि people used yeah. to compare Rashford when Saka came in and there was so much comparison between both of them. Rashford is much better than Saka. But this is the thing. Saka ने अपना शूटिंग बहुत improve किया है. And but this was एक the minute first of all I think this should have been a save I think keeper considered it way too नहीं easily वो जो भी है but उसका Arre, shot was also it's too clean. close. Yeah. It was a Yeah, good it's shot. too close. Yeah, it's too close for him to save Exactly. that easily. और वो Yeah, बहुत Fabianski it's too would have close. powerful saved था. it बहुत Yeah. powerful था, yeah. Fabianski would have saved it No, it was too powerful. It was So, too powerful. Very well shot. and no, you know what? If you just want to consider skills, I would still say Rashford is better. The Yeah. only thing is work ethics wise, like literally itna zero, and Rashford is in Footballer the minus. killer Rashford is better. Footballer Saka is better. Saka is better. देख And एक पता mentality है Saka is better because he's like, okay, he'll keep going. He'll keep going. ट्रू ट्रू True. देख ये Very true. तीनों प्लेयर्स ने वो यूरोस के फाइनल में जो पेनल्टी मिस किया राइट Hmm. रैशफोर्ड साका and Sancho. Sancho. All Uh-huh. in those three, only Sancho came back from it and became the player he is right now, right? Baki all both Rashford and Saka came Sancho, back. Saka came back. Yeah, Sorry, हाँ I was भाई Saka like, came back. Sancho came Saka, back भाई. sorry, Saka came back. Baki Sancho I was and like, Rashford dono have just dropped after that continuously. I But mean, Saka, Sancho did well last season, man. I would like for Dortmund. I mean, they reached the finals. हाँ मतलब वो एक सीजन तो देख रैशफोर्ड भी अच्छा खेला है उसके बाद right? वेरी मतलब बट वेरी वेल रन एंड मतलब ऐसा काट के काम Very like well when done. you're This coming is back from an yeah. injury and if you're doing this great respect That too against Robertson, man. That's not a. ये Yeah, मैं yeah, जब yeah. बेस्ट प्लेयर बोल रहा था I was just about to joke कि Ben White would be the best player. Irony is he made the pass. Yeah. And that is an underrated thing because of Saliba's emergence, he had to switch. He had to move. I think Uh, yeah. keeper had a chance to rush Otherwise, the ball.
Otherwise, Ben White has always been an amazing long Ben ball passer. Yeah. बेन वाइट को देख के वो जो प्रॉपर ब्रिट बॉयज की फीलिंग आती है ना, लाइक द Yeah. फुटबॉलर्स ऑफ 90s, रॉ, रगेड, लाइक इज नॉट दैट बल्की बट फुल वाइब्स देता हूँ. Right. And he got a lot of shit for saying that, oh, I don't watch football. I mean, he acts as a professional, and he is a professional. So he's like, I'm completely fine. And this is another piece of football, right? Like if you look at, again, nothing against blacks or something, not on the racism lines, but the whole culture with Ben White and this fellow Maguire, right? Look Yeah. at what they've gone through and how much better they have dealt with it as compared to any other guy, be it be Sancho, Oh, yeah. be it Rashford, right? The way they, I mean, the amount of shit Maguire has got, like getting booed across अरे the यार, matches. ऑटोग्राफ वापस क्या कर दिया था यार फैन क्या ने. यार, बू कर दिया तो इतना रो पड़े तुम लोग. मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा. वर्ल्ड कप या पता नहीं यूरोस था, एंड क्रिस्टियानो एंड रूनी हैड दैट फाइट वेयर रूनी Oh, गॉट bhai सेंट ऑफ साहब, oh एंड World shit, रोनाल्डो like, केम बैक. Every touch he had, he was getting booed at that point of time, right? yeah, yeah. And became the best player. People, yeah, people, these days have gone so soft कि मतलब ऐसा थोड़ा छू लो तो That was करके the गिर जाते season, हैं, no, पता but नहीं. that was also the season Ronaldo was prepared that I'm going to Madrid. Yeah. तो उस सीजन में he was very clear कि अब मैं जा रहा हूँ. So he did that, whatever happened, but he was like अब मैं वापस नहीं. He called Rooney and he told him as well, and he was like मैं जा रहा हूँ. And then Sir Alex came in and like अभी नहीं जा रहा है तू, hold on. I think not हाँ. Madrid, that season he was going to Barca. Yeah. I was like, Yeah. Madrid, huh? Yeah. Madrid was, I think, 2008 after the Champions League. Yeah. And then Madrid he का said, उसने stay एक साल back. तो रुकवाया ना. Madrid also Yeah. he made him wait 1 year for Madrid as बट well. जस्ट 1 year. इमेजिन अगर वो बारसा जाता. Oh, Philip. भाई बारसा फैंस जो बचते भाई आज, अगर वो बारसा में होता. नहीं, फिर दोनों में से I एक don't भी think इतना so he ग्रेट would नहीं have बन stayed पाता. इतना लंबा उधर से with Messi coming in, and I don't think so he अरे would have यार. been able to play with Pep. नहीं, फिर दोनों में से दोनों ही इतने बड़े प्लेयर्स नहीं बन पाते. भाई ये या नहीं गंदा बन गंदा पाता. फैलागा. There's a good attempt, huh? Good attempt. इस साला का वीविंग हो गया. Uh, that's a good shot. I'm excited for Mourinho. He just made a mistake, but I think he will solidify even further. अरे I like देखा him. तुम I like like his yeah. I like his player profile. Yeah. And the thing is, I am not so much for starting Mourinho, Rice, and Partey together. I think थोड़ा balance बिगड़ जाता है. But Partey is But not playing in midfield, right? Partey is playing on the more he's being a right little back deeper. जैसा खेल रहा है. हाँ, नहीं Right back जैसा midfield में ही खेल रहा है, but खेलते हुए. राइट बैक जैसा खेल रहा है वो. But मेरे को राइस, Timber है I ना. enjoy watching राइस. हाँ by the way, मेरे को बहुत मजा आता है उसको देखते हुए. You know, I used to think when he was at West Ham that he's very overrated. Who? Rice? Rice. लेकिन Jara West Ham, when he was at West Ham, I used to be like, why are people Yeah, so but maybe just because he's British, yeah. but he was हाँ also आदमी linked गुजराती with में भी बोल Manchester सकता है. United, right? Yeah. वो साइनिंग कैसे यूनाइटेड ने नहीं की, इज अ मिथ. भाई सॉरी, वो इज अ कैसे Yeah, नहीं की, केडीबी we कैसे नहीं की, कैसे गुंडोगन कैसे नहीं की भाई. we had nothing भाई over United 2023 में. you भले हमने saw Gundogan challenge interview or what भाई after he सब came back? छोड़ो. We had crew signed in. नहीं सब नहीं, कुछ के बाद. गुंडोगन का इंटरव्यू देखा क्या अभी सिटी वापस आने के बाद? नहीं, It I is didn't the watch. I haven't watched. funniest bit ever. So he came back and he's like, you go out of city and you realize that the world football is so shit and the things are so much better in city. मतलब भाई साहब. But Barcelona did very bad with him. Like the entire saga, I mean, two players, they're really messing around. And मुझे उसमें De Jong तो ऐसा गधा लगता है. Like so much insult you have got and you're still playing there. What He's is the this wrong captain. He's with you? earning big wages. क्या है? Ego अरे नहीं. उसके It's not पैसे big नहीं छोड़े wages. ना. उसका पूरा theory आया था. His girlfriend, wife, whatever it is, she's not agreeing to leave Barcelona. हाँ वो तो है ही. भाई. Poor him. So this is like not trying to sound sexist or something या फिर misogynistic, पर आजकल मैं एक चीज बहुत नोटिस कर रहा हूँ फुटबॉल प्लेयर्स का. कुछ भी उनके
लाइक गर्लफ्रेंड या वाइफ्स के साथ उल्टा सीधा होता है उनका, उनकी पूरी लाइफ झंड हो जाती है. हाँ, of course. You know Di Like this a guy. Maria का बहुत बड़ा reason to hate United is his wife. His wife hated it over here. Who? yep, Di Maria. Di Maria. Di Maria. Arey, there was this guy, okay, German footballer, Matthias. Okay, so his wife did not want to leave Italy. So he was a Bayern player, went to Italy, and I think he went to Spain as well. Oh, one अरे goal. यार, चलो I get an assist for Luis Diaz. Oh, I was a little back. Oh, So the wife said, He's going to a I'll not good go game. back to Bayern. hmm. He divorced her. बोला जा भाई. वो सेम चीज अभी हामेस ने भी शायद किया था, बिकॉज व्हेन हामेस आल्सो हैड सम काइंड ऑफ इश्यूज, हामेस रोड्रिगेज, वो मैड्रिड से जब उसका कुछ ट्रांसफर का सिनेरियो बन रहा था, बिकॉज ही वाज प्रोबेबली नॉट गेटिंग दैट मच अपॉर्चुनिटी और वो समथिंग कहाँ है यार? डिस्पाइट ऑफ Where is डूइंग he वेल. playing? ही ओनली प्लेस फॉर नेशनल टीम, और नेशनल टीम के लिए वो बहुत अच्छा खेलता है वो. नहीं, but he's playing to some like some other country only has went. He's like not in a mainline country anymore. कहीं तो कोई तो क्लब के लिए वो हाँ, प्ले खेल रहा है. मेन लाइन नहीं अरे खेल पता रहा है, है. Madrid goes and gets him for right back. This guy, Trent. हम्म. It will be a very stupid decision. That is not the player profile they need. नहीं है, मड्रिड ये ले बंदा नहीं लेगा. चाहिए उनको. मड्रिड डालोट ही लेगा. But if he really goes there, he'll be next level. यार, हाँ, द there प्रॉब्लम इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैं बता रहा हूँ तुमको, United बाकी नहीं सब छोड़ो. United नहीं, United but is again, देखो Madrid में जाके you don't have to do the shit business you are doing at United, ना. यस, And he यस. has a talent and he's a very hardworking fellow. आज तुम उसको, if you look at today's positioning, he was always playing the false back. He was in the यस. midfield. He was there trying to cover up for this guy, Casemiro, जिसको तुमने चढ़ा रखा है. So he's not comfortable with what you're making him do. Just put him as a wing back and let him do what he does naturally. कल के मैच में if he was there, इसको क्या हुआ डीजे? and you said na just put him wing back, let him do what he does naturally. I think what he did today was very unnatural. अरे तेरा वॉइस बहुत कम आ रहा है डीजे. Oh, is it? एक second. मतलब आई वुड एग्री ऑन दैट. ऐसे इन जनरल डायलॉग का देखने जाए तो परफॉर्मेंस अच्छा ही रहता है, बट दिस वाज लाइक वेरी, इट वाज लाइक एन एबेरेशन नहीं, but he फॉर has श्योर. dropped from last 2-3 matches. He's really dropped. नहीं, लास्ट मैच ही वाज वेरी गुड. अभी वही है ना, उसका मैच फिक्स है. आप उसको कितना करवाओगे? एंड लुक एट द अमाउंट ऑफ फुटबॉल ही इज प्लेइंग, मैन. गिव हिम अ ब्रीदर. प्लस लेफ्ट बैक से फिर भाई राइट बैक, ये राइट बैक से लेफ्ट कैसे बैक, लेफ्ट भूल बैक नहीं राइट, गया. क्या चल रहा है? भाई ये बच गया भाई, बट गया, ये वापस गया. ही जस्ट केम बैक फ्रॉम इंजरी, नो. Who? Yeah, माइकल मैरिनो, Bruno. Who is this guy? Where did he come from? स्पेन. Spanish. Hey, but what? Sociedad. Do you guys Real like Luis Sociedad. Diaz? और amazing यार, amazing player यार. मुझे बहुत मजा आता है उसको देखने में. लुइस डियाज मस्त है, एकदम फाइटर बंदा है, मेरे को पसंद है. तो He has देखने that, में डर लगता है. he has that flair. मतलब वो ऐसा, वो ओल्ड स्टाइल जो होता है ना विंगर्स, मतलब हाँ, ऐसा बहुत मजा आता है उसको वैसे देखने में. लाइक लुइस डियाज इज समवन हु डज नॉट गिव अप. मतलब अगर बॉल छूट भी गया ना तो भागेगा उसके पीछे, अगर पास मिलेगा भागेगा. आज की डेट में बहुत कम फुटबॉलर्स बचे हैं जो वो कर रहे हैं. मतलब एज अ यूनाइटेड फैन तो मैं बोल सकता हूँ अपने यहाँ पे तो कोई नहीं है ऐसा. अमद करता है, अमद करता है. See, फ्रेड करता था अभी भी भाई, look at this goal. He विंगर्स में had नहीं, the फ्रेड करता था. look at the goal. He had the courage, or you can say he had the sensibility कि I cannot hit this win, or I cannot try to hit this win. Let me try to put it in a tough situation, tough spot, कि कुछ तो बन सके. If this was someone from United, he would have still tried to go for a goal. He was not going. It was intentional. The pass was intentional. Yeah. पार्थ, यू I mean, we रिमेम्बर, should. हाँ बोलना. I gave you the analysis of how Arsenal takes corners, right? तू देख, अभी अभी ध्यान से देखना, वो लोग अगर उनको कॉर्नर मिलेगा ना वही चीज करेंगे. Like the same format, like overloading the entire box close to the goalkeeper and then having 4 players charge in towards that 6-yard box to head it. ऐसे ही जनरली वो लोग ऐसे या तो सलीबा या किसी से गोल मरवाते हैं. कॉर्नर्स में उनका वही स्ट्रेटेजी है. Yeah. But we shouldn't have been conceding that one.
Yeah, हाँ बोलो. this is something that was like a little difficult. मतलब ये concede Hmm. नहीं करना चाहिए था, that is for sure. I don't think Mhm. so, but because मतलब when I look at Liverpool taking corners, I see Van Dijk and I'm like, भाई ये आदमी कहीं तो पहुंच ही जाएगा ना, मतलब पहुंच जाए. how much do you like same goes with Haaland, right? वो कुछ ना कुछ उल्टा तीरा उठा ही लेगा. ये देखा क्या तुम लोगों Yeah. ने आर्सेनल का जो स्पॉन्सर है शुभा रियलिटी, इट इज Mhm. अ इंडियन reality business. So many Indian this what do you call celebrities are now getting to watch Buying houses. No, Yeah. no, they're going to Arsenal, and Hmm. continuously you'll see every other week someone or the other is getting to watch a match. अच्छा है रणवीर सिंह नहीं है. I actually didn't know that Shobha was Indian sound karta tha. I was like, maybe that's Indian, but I didn't do any research into that. And you know where they develop those properties, right? It's at Highbury. Oh, Dubai है ना But nahi, the ones in London are in Highbury. yeah. Yeah, very fancy apartments. उसका कुछ पार्टनरशिप वहीं से आता है ना सिंगापुर Yeah, और yeah. यूके बिजनेसमैन. I mean, conceding is fine. Last season also we were 1-1, and नहीं, पास देना चाहिए था साका को. that should have gone wide. oh, nice try. Like Saka has improved his shooting, but I think ये सारे angles में अगर Foden होता, then he's like dread. You know, he's I like think very deadly. but वही है ना Yeah, कि yeah. there's this level where there's Rashford and all this, then there's Saka, and then there's Foden who is two levels above both of them. Hmm. I You think he's just a good fit into a system. I think he's okay. who And Foden? had Foden. a comment. 3 times this season we feel injustice. We have to score. We created so many chances. We should have been 2 or 3 up. Second half, we were forcing it, but we allowed them into the game when we were losing 1-0. You need big personality and character of the team, showed the resilience to get back into it. Unfair and unjust the way we conceded the penalty. I mean, Or what is फिर it? he just went on with the whole how it was हैवेल्स not a का penalty साइनिंग at मेरे the को end. अभी भी नहीं समझता है. लाइक आई डोंट वांट टू डिस्कस टेनैक, मेरा खून खौल बोल सकता है, मैं गाली वाली दे सकता हूँ, बट ये हैवेल्स का साइनिंग इज जस्ट Amazing. Best. Havertz and Even Mount. Best deals in universe. But मतलब Havertz has done well for master Arsenal. stroke. yeah. नो Yeah. नो, He's आई एम done नॉट well. सेइंग ही इज नॉट डन वेल. आई एम सेइंग कि तुझे जहां उसको खिलाना है, मतलब तू उधर फॉर एग्जांपल तू वहां पे होलून खरीद सकता था वो पैसों में. Right. तो तू क्यों लेने, क्या करने गया है तू उसको लेने. अरे neighbor helping neighbor. मतलब उसने लिटरली चेल्सी का तो मुझे ऐसा ही लगता है कि पीपल जस्ट गो एंड हेल्प देम आउट. यूनाइटेड डिड विद माउंट. मतलब Best. हाउ स्टूपिड कैन Amazing. यू बी, राइट? हाउ स्टूपिड कैन यू बी. वहां पे भी But I वही था. really feel that there is something money laundering involved over there. जिस तरह से आर्सेनल और यूनाइटेड गए हैं कि भाई कहने को बुक्स पे वी विल से 60 मिलियन, तुम दो हमको 10-15 और अपने निपटाते हैं इसको. हो ही सकता है. In But that still, sense, अगर even if that is the business United went out and did with United's books, Arsenal did it, that's understandable. उनके बुक्स अच्छे हैं. अपने बुक्स के सामने अगर तुमने 10 मिलियन में भी माउंट को खरीदा और 60 मिलियन दिखाया, तुम फिर भी नुकसान में. भाई बट अपने ग्लेजर्स है ना, वो बोलेगा 60, अपने देंगे सिर्फ 10. अपने को तो प्रॉफिट ही है ना. When you see it from Glazers अगर and हाँ, ग्लेजर इकोनॉमिक्स हम अप्लाई कर रहे हैं, that's a different हाँ, thing. 10 मिलियन में क्या गोल मारे यार माउंट ने. कितने गोल मारे? 0 भाई कितने मैच के लिए वो पूछ भाई. नहीं एक मारा है ना उसने शायद. एक मारा असिस्ट है. किया है. गोल मारा चेल्सी है के कि कुछ सामने ही और? मारा था. आई नहीं नहीं थिंक. नहीं. नो नहीं नहीं गोल्स, नो गोल्स. नहीं. No. नो गोल्स. उसने अच्छा असिस्ट था. उसमें कुछ मारा था, प्रैक्टिस मैच या किसी में कुछ मारा होगा. Come on. अच्छा. What is he हाँ, injured? friendly में शायद Injured as मारा of होगा. now? Is he injured? Mount is injured. इंजर्ड. ब्रो कब हुआ इंजर्ड? अभी तो आया था थोड़ा he टाइम has पहले वापस. truly he has truly replaced ये मार्शल एंड जोन्स फॉर अस. और फिर उसको उठा के I still remember Ten Hag's comment on giving him number 7 shirt. हाँ? बट नंबर Number 7 तो seven. मजाक ही हो गया है wait यार wait अभी wait रहने wait पे. wait 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 but
Ui. Look at Diaz, man. Just look at him. भाई ये पेनल्टी था, आर्सेनल ने इसलिए दिया नहीं। या कुछ भी है कुछ, मतलब नहीं, दूसरा बॉक्स है वो, ये बॉक्स में पेनल्टी नहीं मिलता हमको। बिजनेस सबसे खतरनाक बिजनेस तो लुकाकू है भाई। यार बिजनेस की बात ही चल रही है तो अल्वारो मोराटा से बेटर बिजनेस कोई नहीं है भाई। Both of them, Lukaku and Alva. That is where you can talk about money laundering, huh? हाँ वो Completely. प्रॉपर मनी लॉन्ड्रिंग है। और वो आदमी क्या हाँ। था, लुकाकू। मैं घर से जाता था, जब ग्राउंड से पास होता था, और मेरी मम्मी दोनों को के दोनों बोलता था। चेल्सी के स्ट्राइकर्स रह चुके हाँ। हैं। दैट्स जस्ट मैं आयरन। नहीं, बट उसने वहीं पे भी अपने लिए भी कमेंट किया था ना, जब भी मैं जाता था तो मैं मेरी मम्मी को बोलता था, मम्मी मम्मी मैं एक दिन इस स्टेडियम में खेलूंगा। भाई वो आदमी जिस क्लब में जाता है वो पहले के उसका बैच वैच किस करने लग जाएगा सब। ओ, बच गए। पीपल टॉक कि आर्सेनल नीड्स टू चेंज देयर कीपर, बट दुनिया में अभी कीपर अवेलेबल कौन सा है? Well, Raya is not bad यार, मैं and तो I एक think ही couple of बोलूंगा games वी आर have been हैप्पी, very good. वी आर हैप्पी, राय इज गुड मैन। Raya has been good for them. Both वो of them, लेकिन Ramsdale, लोग कहते, like I see people talking about Chelsea fans and even this guy Yeah. Arsenal fans, मतलब Chelsea का भी Sanchez is okay, but then who do you have available? आर्सेनल शुड जस्ट दिस गेट बैक एमी I मार्टिनेज, मेरे think को Chelsea लगता है। should just get Onana. Give us 100 million. Mount का भी redeem हो जाएगा। कौन था ओ, ये Havertz भाई? One मिडिल में guy I miss, ताकत है। German footballer I really miss that, or I really feel bad कि didn't work out was Götze. भाई what a player ओ he was. अच्छा प्लेयर yep. था। Pep ruined him. यू वर्ल्ड कप विनर। हम्म। But what a player, man, what a player. But again, you know, you What used to show, signing Havertz? Yes, come on. क्या था भाई ये? Yes, we'll win you ऐसे वन Champions टच League. तो अपने जो 7 साइड खेलते हैं उसमें लोग लेते हैं। वो लोग मैं हूँ. Come on, Havertz. Yes, best Arsenal player ever. Will surpass Tony Adams. Yeah, if he scores in Champions League, sure. Best player By the ever. way, I'll just I talk mean, about standards ना। अभी जब तक अपने यूनाइटेड का मैच देख रहे थे, we still had like 6-7 का watching. तो अभी यूनाइटेड का we have one and that is अभी वाले मैच में we have one का watching. That is also me from my other mobile. Wow. So if you want to get entertained, don't watch Arsenal Liverpool. Watch United. no, just title your uh, live or video as United, and then talk about anything. Yeah. But I expected this match to be much better than what this 30 minutes have been. The teams are too close, and this both are strong defensively. Although we have leaked goals lately, but they generally both are strong defensively. I didn't actually expect two goals to be there. The two goals would have been scored by now. बट इतना क्या अच्छा कहेंगे? मैच हुआ नहीं है, लाइक नहीं ए, नहीं नहीं, oh! Havertz. I'm a little behind. आई एम बिहाइंड टू। अरे वो ऐसे ही फाउल दे दिया था बट Oh, Havertz. What a player. वो मार्टिनेली ने हैंड से ऐसा करके ही अगर 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 वो वाला वेस्ट हैम को पेनल्टी दिया तो ये तो पेनल्टी 100% है। I अरे don't नहीं, know पर what बाद में happened. देखता है एवर्ट्स ने क्या किया, उसने हाथ से ऐसे करके उसने बॉल ऊपर किया फिर किक किया है। अच्छा Did ऐसा he? है। I don't know. I don't think. आई डिडंट सी दैट। we should नहीं we यार should कुछ bring भी। a Liverpool fan. Martinelli हाथ से गया ऊपर. Yeah. We need to Martinelli bring का. a Liverpool fan on the channel, man. You guys have a Liverpool fan? I do know him. I do have a couple of Liverpool fans. I Akash, can you go back to your default mode? was surrounded by Liverpool fans in my college days.
अच्छा, मैं तुम लोगों को तो पूछ रहा था ना, व्हाट इज द क्रेजीएस्ट मोमेंट। आई मेट अ पर्सन, वो किस क्लब का फैन था? Spurs. West Ham. स्टोक सिटी। आई वाज Yeah. Nice. Oh, भाई तू पीटर क्राउच का फैन था कि तू स्टोक सिटी का फैन था? was he a liberal by any chance? वो वो क्या है कि ओ द स्मॉल टीम मैं उसको सपोर्ट करूंगा दिखा I'm a liberal. कम ऑन मैन। But over there you will find many like उन लोग का तो वही है ना, obviously city based है, मतलब जिस सिटी में उधर तो रहते अलग हैं। कंसेप्ट है ना यार। हाँ, अब तेरे but को, तू अहमदाबाद में रह के तू बोलेगा कि तू वडोदरा का फैन है, वो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? me saying मैं वडोदरा का fan हूँ is as it is never going to happen. Hopefully, that's what. Are you guys doing something for Diwali? Both of you? Park DJ. जा रहे हो क्या कहीं पे? डीजे नहीं. तेरे को तो अब छुट्टी होगा, राइट? Yeah. नाइस। Yes. 2 days. ओ हो। Diwali and Lam Pacham. मेरे को इस दिन इतना बड़ा शॉक लगा था जिस दिन पता चला मैकएलिस्टर अर्जेंटीनियन है। I was like, what the- Yeah, sounds English. अब आयरिश बॉय कहाँ पहुंच गया भाई? तू कौन सा, तेरे उड़ते हुए चले गए तू। I realized that जब उसका एक्सेंट सुना ना तब hopefully Saka आई वंडर मेसी is उसको not कैसे समझता है। injured. हाँ. Ankara Messi, Ankara Messi. आई हेट दैट गाय मैन। Messi? Why? मेरे को बात तो अब नहीं पता है. है मैं अर्जेंट वर्ल्ड कप के बाद There is a thing Anyone to who that. believes के वर्ल्ड कप was not rigged is fooling themselves. It's oh man कम ऑन। Adit left at the wrong time. He's अच्छा, a ये big सब Messi, Adit would have Messi had a fan or what? conversation about that he with you. just came in. No, he's back. You say the same thing once he's on video. You say the same thing, and then you'll hear stuff. But after वर्ल्ड कप ना, एक मिनट, अरे यार, You आफ्टर वर्ल्ड know, but कप did you see the recent Inter Miami competition where the FIFA president went? No man. So they So won a there. cup, okay, which has no bloody relevance with anything related to Club World Cup. कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं. They win this trophy. They win this सपोर्टर्स cup. क्लब. Indian सपोर्टर्स Inter क्लब. Miami wins this cup. So this guy comes there. He goes for the celebration. He's part of the celebration. Okay, bloody Oh. FIFA president, UEFA president. He goes there and then he announces, "You guys deserve to be in Club World Cup, so you'll be playing." What is the point? Nothing. बस मेसी है, मेरे को खिलाने का है उसको। Bro, I So don't like your comment. Penalty to Argentina. so what did you just say, Dushant? वो मैंने तुमको बोला था ना. You can repeat. World Cup was rigged. That's what I said, man. It is rigged. सवाल ही There पैदा you नहीं go. होता. He's not a Messi fan. Just so you know. No. Bro, I mean, I think it's all of not us, about other being. all way of around. us, It's एक second. It's all of not about even being a Messi fan. I have हाँ, been right. like a sports person. ठीक है. मैं फुटबॉल खेला हूँ. मैं बड़ौदा के लिए खेला हूँ. मैं गुजरात के लिए खेला हूँ. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए फुटबॉल खेला हूँ. एक चीज बहुत कॉमन सेंस की बात है. मेरे को सिर्फ ये समझा दो. कोई बंदा खड़ा है. उसके अंदर कोई बंदा भागते भागते घुस जाता है. ठीक है. तो जो बंदा घुसा है उसको पेनल्टी कैसे मिल जाती है भाई? मुझे सिर्फ समझाओ ये अरे क्या लॉजिक है? मतलब नहीं, भाई I think penalties गए तेल पीने, forget penalties. If someone sees Netherlands, that भाई ये क्या कर रहा है भाई एवर्ट्स भाई? ये क्या प्लेयर है? come on Havertz. Yes, I love him. I'll name my kid जो Havertz. डच नेदरलैंड्स वर्सेस अर्जेंटीना वाला मैच था ना, वो अरे जीता वो तो जागता प्रूफ कैसा मैच था यार। प्रूफ है। मतलब उस मैच में मेसी इतना भूल गया कि भाई इतना भी तो नहीं दिखाना है दुनिया को कि चोरी हो रही है। ही लिटरली, बॉल है बाहर जा रहा है, इट इज गोइंग आउट एंड ही पुल्ड दैट इन एंड देयर वाज नथिंग गिवन। बॉल तब तक अंदर था, इट वाज नॉट इवन आउटसाइड। वो ही वाज ऑलरेडी ऑन अ येलो, ही कुड शुड हैव बीन गिवन येलो एंड सेंट आउट ऑफ द ग्राउंड, बट रादर डच वाला मैच वाज हॉरिफिक टू वॉच मैन। मैं वर्ल्ड कप के The बाद only thing I was happy about was कि वेन डाइक के साथ शिट शो हो रहा है, मतलब तू डिजर्व करता है साले।
So the only thing, ये वर्ल्ड कप में पहले obviously I hate Messi and all of it, but वर्ल्ड कप के बाद मेरे को ये प्लेयर I hate him even more, ये डी पॉल, दैट एटलेटिको ओ मैड्रिड भाई, वाला प्लेयर। भाई भाई वो जिस तरह से मेसी को प्रोटेक्ट करता है ना, उससे मुझे और ज्यादा नफरत हो आकाश गई डजंट कि अंडरस्टैंड फुटबॉल। हाँ, एक आकाश, तू फुटबॉल देखता नहीं, बिकॉज नो वन कॉल्स हिम डीपॉल, इज मेसी बॉडीगार्ड, लाइक दैट्स हाउ वी पीपल प्रिफर हिम। मेसी का Exactly, बॉडीगार्ड bodyguard. तो डीपॉल कौन बोलता है? अच्छी अच्छी बात बोली है, लोग तो मेसी हाँ, का टट्टा ही बोलते उसको उसकी बीवी भी उसकी नाम से जानती है। हैं। उगारते ने तो उसको बोल दिया था कि ले ले इसको मुंह में, ऐसा हाँ, और वो भाई वैच ने बेस्ट बोल था दिया था। भाई। That was another happy moment when we signed United, कि भाई Ugarte is the one I want भाई, बेस्ट। मेरे को लगता है बेचारे को पीएसजी से भी इसलिए ही निकाला। भाई वो हेवर्ट्स का देखा, उसने मुंह यूं फेर लिया तो उसकी पता तरफ नहीं बॉल क्या आ था रहा था भाई। तो फेंके हुए बॉल नहीं उठाता एवर्ट्स। आजकल का ये जो जर्सी के ऊपर उन्होंने गनर का साइन बनाया ना, जस्ट लुक्स टू कूल, वेरी नाइस। हाँ, इट रिमाइंड्स देम कि क्या तोप मारा है तुमने। नहीं, तुम टोपे हो। Wait, that was an excellent comment. One more Ballon d'Or for Messi. हाँ, कल परसों था कहीं पे, ठीक मैंने है ट्वीट यार। पे पढ़ा था। I mean, even if let's say even if it was rigged, he had to at least score the non-penalty goals यार। चल रहे, एक गोल नहीं मारा वो नॉन पेनल्टी, भाई जाके स्टैट्स देख तू। What? उसके उसके गोल देख के बता मुझे नॉन पेनल्टी गोल कितने थे। I have no idea. I don't know. He scored what, 8 goals? एक हाँ, एंड हाउ मेनी ऑफ देम वे पेनल्टी, जाके चेक कर। They were what, 7? I don't know. 7 penalties. 6, I think 5 or 6 was penalty. I No, think. he but I think scored he scored seven. two in final, right? एक final में मारा था वो penalty नहीं था extra time में। तो No, वही तो one गोल was था penalty. भाई। हाँ, सऊदी अरेबिया से जब मैच हारा ना ये अर्जेंटीना। तब हाँ, अर्जेंटीना, हाँ। ये रियलाइज की टीम के पास कुछ है नहीं, तो सब कुछ ही रिग्ड करना पड़ेगा। उस दिन से क्लियर हो चुका था। यार बेस्ट वुड मतलब हैव बीन कि उस दिन कुछ गलत करते भाई, फिर जो सऊदी अरेबिया कतर की बजाता ना भाई, यार पर मुझे बेस्ट। मुझे तो उसी टाइम पे समझ में आ गया था, क्योंकि अगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर खुद ये बोल रहा है, ठीक है, कि वी हम्म वांट टू सी मेसी लिफ्ट द वर्ल्ड कप, फिर जियानी इन्फैंटिनो बोल रहा है वी वांट टू सी मेसी विन, इट वुड बी इनजस्टिस इफ ही रिटायर्स विदाउट विनिंग द वर्ल्ड कप। भाई तू Yeah, कौन है ये बोलने वाला? I think yeah, those statements were not true. Yeah, if you are in a position of like नॉट ट्रू, नहीं, नॉट राइट, दे वर ट्रू, not right, Not right, दे yeah. वर not दे वर right. ट्रू। I mean, at a position where you are a governing body के head हो आप, so that should not happen. And I think that says itself, right? I mean, you cannot be a true GOAT if your position is being debated. Like Sachin's position is not debated at all. No one can come near to him. Michael Jordan is not debated with anyone. एग्जैक्टली। I think there will be another Messi, but Rashford's I don't think position also cannot be debated. I'm sorry. क्या Rashford's बोला? position can या also be not Rashford debated. is he'll be the original Thrashford forever. Rashford is not GOAT. He's the Hindi version of GOAT. He's Bakra, you know. But I think there will be a lot of another Messi's. I think I will see a lot of Messi. But I think you'll ever get to see a person like Ronaldo. He was not No. the player who he is right now. He actually changed from a winger. He became a goal scorer. And I think what he did in Juventus, I think it's very underrated. ओ भाई, True, It's true, very true, वेरी true. underrated. What 100%. Yeah. Italian Serie A, it's not easy to score. And for what 3 seasons he scored some good 30 plus goals. Yeah, back to back 3 seasons with a club which was going through transformation. With United he came in, he started scoring यार at the age of 35. वो भी उस यूनाइटेड में कोई क्रिएटिविटी थी नहीं, लाइक आई डिडंट सी एनी क्रिएटिविटी इन ओले, और उसमें कोई टैक्टिक के बिना ही प्लेड विद these people Lingard and all these बच्चा kids. one thing which people very people forget in that era, in that whole United era, is the amount of chances he created for Bruno, and Bruno messed it up. People really need to look at that number. डीजे तू इतनी दिमाग वाली बातें करके इतना अच्छा फुटबॉल अंडरस्टैंड करने के बाद फिर तू कैसे चेल्सी सपोर्टर बन गया? हाँ, अरे एवरी No, जीनियस so he हैज अ chose the फ्लॉ। smart option, right? जब वो बना सपोर्टर तब मोरिनो सब कुछ जिता रहा था इनको। नहीं, I became when in 2002 when Ranieri was there. That was one of the first matches I saw, and then the
what the next year, Ken Bates, he was the owner. He sold the club for £1. like ये क्या इज्जत है बाबा £1 का क्लब मेरे पास तो उस समय £1 मैं खरीद लेता what the hell I didn't even know or I took me what उस समय तो there was this channel right ESPN and cable होना घर में was a privilege तो 2-3 घर छोड़ के I used to go and watch who scored I'm behind So am I. uh, मत पूछ, देख ही ले लाइव. Yes! मैं खुश हूँ. और ओ मेरे भाई I knew साहब. this guy. अरे यार why is he scoring Mikel. भाई उनका Mikel. सेट पीस कोच दिखाते हैं, हमारा सेट पीस कोच छुप के बैठता है, नहीं आ गया बाद में. come on Arsenal का 2 हो गया अभी काका का Liverpool needs assist to है score ना? 2 no it is Rice काका Rice. Rice Declan Rice took the Rice free yeah. kick. What a Right. pinpoint Outswinger pass था. है, what a pinpoint. And people were saying कि Rice cannot pass the ball. भाई ऑफसाइड नहीं लग रहा है? off नहीं नहीं लग रहा है. He came from an offside position. नहीं, किसी की लात है. off नाखून ऑफ off है. उसका I think off है. नहीं नाखून off है यार. उसका ऑफ ही होना चाहिए. yeah he's off अरे he's off आर्सेनल डिजर्व ही नहीं करता है कुछ अच्छा. off अभी हाथ नहीं देना यार हाथ तो क्या दिखाया हाथ off offside The only possible reason offside ये ऑफ नहीं दिया No, this जाएगा will be it on. is like has to be This is on. off yeah this has It's to on. be It's on. This why is it is मैं टीवी ऑफ कर दूंगा what is this what is it showing Philips air fry what will I do with Philips air fry मैच दिखाओ मेरे को हाँ भाई it is नहीं it is on ah It's on. It's on. on. यार मेरी It's on. स्कोर लाइन जो मैंने प्रेडिक्ट की थी वो तो अभी ही हो गई है 2-1 तो पहले ही Come on. हाफ में. no so अभी रेड कार्ड मिलेगा आर्सेनल को and then Exactly. Liverpool will win 3-2 come on I think I it's 3-2. insanely tight. 3-2 नहीं मतलब वो आर्सेनल के साइड पे होगा. एक मिनट बट ये पैर किसका है जो ये आर्सेनल भाई हाँ अच्छा वेन डाइक का ही पैर है. वेन डाइक का अरे मोरिनो तो और पीछे है. हैवर्ट्स थोड़ा आगे इसलिए नहीं रेड बट आगे दिख रहा but मोरिनो that's का off यार Merino is लेग off है ना वो isn't he बाहर off है थोड़ा. I think he's off नहीं बहुत टाइट नहीं, है मैं- बहुत टाइट है. अरे ददीची वो ब्लू ग्लासेस नहीं रे, वो ब्लू शूज देखना, वेन डाइक का ब्लू शूज देख. वेन डाइक हाँ का वही बोल रहा हूँ. Van Dijk का उसी blue line shoes में- में देखूं उसी तो भी line यार, में Merino is मोरिनो का भी है. हाँ मरीनो का ऑफ है यार नहीं he's off. इट विल बी अनफेयर, इट इज नॉट ऑफ. अरे मरीनो Has to be. पीछे है उसका हाँ, क्या? भाई हाँ, मोरिनो उसी का। पीछे नहीं है. ये रहा उसका हैवर्ट्स क्या के है? पीछे तो है. नहीं हैवर्ट्स के पीछे कोई और छुपा अरे हुआ है वही एवेज के मतलब पीछे नहीं, वो जो पीछे गोल्डन मतलब शूज है, हाँ गोल्डन शूज मरीनो का एंड इट इज बिहाइंड वेन डाइक का शू. I doubt इट इज वेरी has टाइट. to इट be इज off. वेरी टाइट. Off, आई थिंक off, दोनों का off. जैसे एक साथ है. On the line off इन लोगों को लाइन ही नहीं मिल रही अभी तक बनाना. अल्लाह यार ये क्या है ज्योमेट्री नहीं पढ़े लोग बचपन में क्या भाई है एम्बाप्पे थोड़ी ना है, ऑफ साइड में रहेगा पूरे टाइम. ओ भाई hold on they're speaking to city officials. हाँ वो सिटी से बात कर रहे हैं. गोल देना है नहीं दे रहे हैं. come on यार मैनचेस्टर सिटी से बात कर रहे हैं रुको. what is this technology how come Listen to this. Anyone poor on. on है रे. On. how वो तो come on ही था. a country On which ही था यार. हाँ. started industrial revolution can be so behind in technology यार what is this यार Look at this. Poor, this is a United fan, okay? Poor ETH is likely to get sacked after a game we completely dominated and have been fucked out of by an absolutely atrocious VAR decision. Anyone who's taking joy in this needs a psychiatrist. This comes from a United fan. उसके बाद क्या होगा हमारा भाई? एक मिनट मार्क ने डाला क्या? नहीं मार्क ने ये पीट. what did Okay. you repeat that Could you Okay, repeat okay. that? What Yeah, I was like Mark ने डाला होगा I would have disrespected because I actually respect the guy. No, Mark ने So, Mark I like Mark said that he the to players go, in but penalty. हाँ Mark has blamed everything on the players in the penalty given. नहीं लेकिन मेरे को मार्क की वो बात भी सही लगती है कि मैनेजर को निकाल दो. आई एम नॉट सेइंग मत निकालो, बट प्लेयर्स को ये निकालो. मैच में राइट मैच में प्लेयर्स की गलती है लाइक मिसिंग द हाँ, चांसेस. you have to call it out. 100% या बट मैनेजर की गलती पूरे सीजन में नहीं है वो तो. दैट्स जस्ट नहीं रॉन्ग. यार मार्क का 5 ड्रॉ और 5 लॉस के बाद अगर मैनेजर की गलती नहीं है आई थिंक यूनाइटेड को ओवरऑल दे नीड टू लुक एट देयर सपोर्ट स्टाफ एज वेल. जो लोग कोचिंग कर रहे हैं, द बॉल होल्डर्स एंड एवरीथिंग. इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू द कोच.
Managers वो don't coach पूरा football, and that is where somehow मेरे को I really love this Liverpool का structure that they brought this guy and they told him, boss, we just need you to coach. That's it. You're not going to look at anything else. Nothing. वो सब Michael Edwards देखेगा. तू सिर्फ coaching कर. And he understands that role. That's right. I think that's where the turning point for Arsenal with Arteta. Arteta was. So when he got there was I news no, that he got. Parth, I'll cut you off. If you're saying turning point, my question is how long is the term? नहीं with changing his title Ah. from coach to team manager. Yeah, because then it's exactly what Dushyant was saying. It's like play the role that you've been hired for, sort of. But Arteta still needs to have a better support staff of Oh yeah. scouts in terms of player findings. अभी Player right to signings, I है. feel कि उसने अपने आप को, he has put him in a himself in a tough spot with couple of signings. He was doing much better. I think us losing our physio or someone to United wasn't the best thing over the summer. I think you guys got our Wait, what? medical You stuff. lost your physio to Manchester United? Yes. अरे इसीलिए हमारे प्लेयर after- इतने इंजर हो रहे हैं? नहीं, after Percy, I don't think that should come as a surprise. Exactly. Percy, Yeah, if you can sell Percy, you can sell anyone here. I'll not be surprised if Arteta goes to United. Arsenal will regret selling this guy also, Obi Martin, that youngster. Who? Yeah. Oh, They- अरे they- उसको six- कितना Six- that 16-year took a old long striker. time. Yeah. That took a Oh, good save. But उसका That आया took a ना, his long father wanted him to play for United. oh अच्छा okay. But पता it है, took a long ये time for save होने से the पता है, अब ये जो सेव किया ना राया ने, ठीक है, राम्सडेल इसको हवा में ऐसे उछालता, खुद दो गुलाटियां मारता, and it would have been seemed like कि, oh, he just made like a world class Pickford as well. हाँ. But what was the issue? United were having some technical issues, some issues अरे to onboard. प्रीमियर लीग से क्लियर onboarding. करवाना होता है when you sign like अरे this. तो Arsenal 15 years. objected it कि they gave like United signed or promised him a lot of sum. जो उसके फादर वाला एंगल आया, एजेंट वाला एंगल आया कि यूनाइटेड लाइक काइंड ऑफ ब्राइबरी बोला यूनाइटेड ने. Okay. And they approached him without our consent. You still got to take consent in such cases, but they did not take the consent. अच्छा. Got it. Listen, you're not on video. I don't know if you know it. Yeah. Gabriel has मतलब improved massively. दो irrelevant teams खेल रहे हैं, so we can just go back to one more discussion of Messi. एक मिनट, sorry. Just one thing. Guess who was at VAR? United match. Anthony Taylor. नहीं, Michael Oliver. Michael हे Oliver. भगवान! Yes, Michael Oliver. मेरे को वही भाई बोलना उसको था. मतलब उसको यूनाइटेड का मैच अलाउ किसने किया यार? But Anyway, then sorry. एक मिनट, चलो माइकल ऑलिवर ने तो दे दिया, ऑन फील्ड रेफरी स्टिल should have made that decision ना. भाई एक उसके बार बाद एक भी रूल देख ले तू, एनी रूल, एनी डे, एनी वार डिसीजन. हाँ, until it's not an obvious thing, तुम रेफरी को इन्वॉल्व ही नहीं करते हो. as soon as रेफरी अगर गया ना स्क्रीन के ऊपर, इट इज गारंटीड के पेनल्टी मिलने वाला ही है. बहुत कम केसेस है जहां पे रिवर्स होगा. True. That was a good half. तो आज At least at the end. पीपल आज मैं बोला था ना, देखो यही होने वाला है कि पीपल विल कम बैक एंड से डोंट ब्लेम द मैनेजर. हाँ, that तो तो how many Ballon d'Ors of Messi do you think are rigged? He has won 8 in total, if I'm not wrong. 3. 3 are rigged. Lewandowski. Four नहीं, I five. I would say 3. I would say 2010. Okay, let's. I'll count. देख नहीं. रिग्ड 3 है, बट 5 में एक वो भी है ना कि जो इनिएस्टा वाला था, which he took was not something he deserved, and then the other one was रिबेरी वाला. So one Ribery, one रिबेरी वाला Lewandowski. रोनाल्डो को मिला है. नहीं, इसको मिला है when बार्सिलोना फाइनल जीता था. रिबेरी वाला रोनाल्डो को मिला है. नहीं Yeah, dude. Ronaldo got the. हाँ, Ronaldo को मिला. रोनाल्डो को मिला है, जब रिबेरी बायर्न वाला. जीता ना,
when Bayern won UCL, Ronaldo won the Ballon d'Or. Because Yeah, Ronaldo so had like some 80, 90 goals in that season, something like that. but I would still say कि अगर वो if you chalk that out, then he deserved it one over Modric. वो तो Modric, yes, 100% yes. robbery थी. कौन सा रोनाल्डो वाला? हाँ, Yeah, रोनाल्डो. Ronaldo Yes, deserved yes. it over Modric. Yeah. Agreed, For agreed. sure. Yeah. भाई मेसी ने If he would have मुझे stayed लगता है at 4 रिक किए. if he would have चार. stayed at Madrid ना, तो वो मॉड्रिच की जगह रोनाल्डो को ही जाता. That Ballon d'Or too. I don't understand the concept of Ballon d'Or. I mean, on भाई what फालतू basis में are है you भाई वो. judging it? So Ballon it's d'Or There a is no consistent. फ्रांस फुटबॉल से डिफरेंट फ्रांस फुटबॉल के साथ मिलके पहले करते थे एंड आई थिंक यूएफा It is separated still with out of. France football. No, it is still No, with but yeah. you cannot do it on voting, right? You have to, if you are doing it on voting, it obviously becomes No, but it's not. It's one-sided, player right? votes. भाई That अगर it's तुमको player वोटिंग पे ही votes. करना है, विराट हाँ. कोहली को भी डाल दो, मैं गारंटी देता हूँ वोटिंग पे वही जीतेगा. भाई हाँ, Plenty, best exactly my तो footballer point. कल है होगा या यार. कब है. अगर I बेस्ट कल know. होगा कि कल मेसी जीत गया भाई. कल भी अगर मेसी जीत गया फिर क्या हुआ? I think voting नहीं But होना ऐसे है यार. I mean, you are are involving objective. journalists, you are involving. Yeah, I mean, see, because when voting comes into picture, right? There's this image thing which also comes into picture. तो अब किसी को ऐसा है कि if people, because I know for sure this is one thing for sure. I mean, there are more people in the world who enjoy watching Messi more than Ronaldo, because जो gameplay है, I'm not comparing that he's as bad and he's as good, but Messi is something, he's more like he can mesmerize you. Ronaldo is someone जो grit पे चलता है. If you are an actual, if you follow football, you will fall in love with Ronaldo. There's no question about it. I mean, भाई, I think Messi started with a team which was on an all-time high. He was playing with Ronaldinho, then Iniesta, then Xavi, then Xavi. Neymar, then Suarez, PK, Puyol, Busquets. He was born in a team of stars. I'm not taking anything away from him. He did World's best amazingly well. 11. No, he did amazingly well. They dominated. But Ronaldo, he came in through a transition era and he actually got himself up to a level जहाँ पे he made it Messi versus Ronaldo. He made sure that Messi does not, just dominate everywhere. And ठीक है, I mean, many places, I think that the Madrid at that point of time, they made some really, really stupid decisions. For God's sake, at one point of time, the Lasana Diarra was playing, Michael Essien was playing with Ronaldo. What shit team they had True. collected together. अगर Yeah, आज they के had मैड्रिड में आप crazy players. डालो रोनाल्डो को, he'll score 40-45 goals easily. So आराम I से. think voting पे it's very wrong यार. You Yeah, cannot I mean, put look it at on voting. मेसी का वही है ना कि मेसी, even if you compare मेसी के जो सीजन था 90 गोल्स वाला and you compare रोनाल्डो के गोल्स, you realize कि मेसी, रोनाल्डो did it in प्रीमियर लीग and मेसी जिस लीग में खेल रहा था उसमें दो टीम के अलावा तो था क्या, मतलब what at maximum you had was ATM I and think Atletico also came quite late into the picture. I think I'll still give him, because I think maybe it's because the way he plays, he makes it look easy. वो भी चलो दे देते हैं, नहीं but then यार, वहां पे अभी voting. ये आसपास भी यार अपने को ऐसे क्रेजी लगता नहीं, है. because I'll tell you why. नहीं, Because Messi has done it in Champions League में रोनाल्डो से stats तो नहीं compare कर रहा, but if you look at Bayern Munich, right, the way he flowed Boateng, right, he scored 5 But versus. look at who he was playing against. ना मतलब पर साथ 8 में भी तो देख खाया उसके है बाद में. Iniesta. I'm not saying he's not a magician. He's a naturally crazy footballer. उसका gifting, the gift he has been given from God is just too good. And plus उसका जितना height कम है, like the gravity is with him, right? But इतना जितना उसको hype किया है, या जो like people who take him above Ronaldo, you want to take them as par, I can take that. But when you come back and tell me he's above Ronaldo, is not something I can ever take. उसका I would एक not. जो नैरेटिव सेट किया गया है ना, जो स्टार्टिंग से उसका किया गया विद फीफा एंड ऑल ऑफ इट, द गुड बॉय इमेज, वो घंटा बहुत गलत है मेरे पहले. घंटे का गुड बॉय है वो. सही मेरे में. घंटे का और गुड बॉय. अगर किसी ने काका को देखा है, Wow, I love him, राइट, यार. तो Wow, फिर वो what a मेसी को Yeah. कभी पसंद नहीं करेगा. I मतलब, love him, और यार. जो काका का हाइट है, जिस हाइट पे काका के टचेस थे भाई, वो इट्स टफ प्लेइंग फुटबॉल एट दैट हाइट विद द वे द स्किल ही हैड. लाइक सेम गोज विद जिदान. जो जिदान इज फेमस बिकॉज ही वाज सो ह्यूज एंड स्टिल हैड सच अ सॉफ्ट टच. It is very difficult
with that gravity to play. And this guy, he was just doing the same thing at such low gravity, and people, Kaka was too good. उसको अगर इंजरी नहीं होता और the season maybe एक सीजन पहले वो लोग रोनाल्डो के, या फिर they would have bought him late where Ronaldo had flourished with Madrid. I think वो उस सीजन में 100 असिस्ट दे देता काका मैड्रिड जाना ही रोनाल्डो को. नहीं चाहिए होता. Yeah. He should have not went to Madrid only. Maybe that, even that too. But and I think it was very intentional. If you look at the kind of injuries Kaka got, you could see that players were trying to kill him, right? जैसे कि Hazard प्रीमियर Eden लीग में Hazard जो, के साथ सेम हुआ है. हाँ हैजार्ड के साथ जो बेचारे के साथ प्रीमियर लीग में हुआ है, इट इज काइंड ऑफ सेम. एंड मेसी को उतना ही आज आप यू सी द एमएलएस मैच मैन, भाई साहब, अरे मतलब क्या प्लेयर खड़ा है कि भाई मेसी जी आएंगे, मेसी जी आओ प्लीज बॉल टच करो, मैं हट जाता हूँ मेसी जी. मतलब यू आर प्लेइंग भाई दैट फुटबॉल, क्या चाहिए फिर भाई आपको. पर यार एमएलएस की तो बात ही, सी आई विल टेल यू समथिंग, मैं यूएस में रहता हूँ एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एमएलएस गेम्स ओवर हियर. ठीक है, लाइक जब भी व्हेनेवर इट्स casted or something I have seen something. I will tell you which is very funny when Messi comes to play is Messi ने अगर पादा तो गॉट वो इट, इट स्टार्ट्स कमेंटर स्टार्ट कर अंकारा मेसी अंकारा मेसी अंकारा मेसी. तो उसको लवेंडर बोला जाएगा. ठीक है, गुलाब जल. I think the conversation is very like not lopsided. We need a Messi fan here so that we We can will. have a And good. also, this We is need in no way yes. has been like a watch along of Arsenal versus Liverpool. The whole stream that time we have. Hey. Okay, coming back to the Actually, match. Arsenal क्या should लग have रहा है? been 3-1 up if Yeah. not for Havertz. Havertz has been Havertz killing will have them, picked I man. will not. I will not. I Havertz above Messi. What is this? Mount above all. Mount भाई Mount. यार उन उन लोगों दोनों में की हंसी आती बदौलत है तो जब तुम्हारे माउंट पास यूसीएल है. Sorry. Yeah. No doubt. That's why, na, above everyone else. I don't know if Todd Boehly or Roman Abramovich. I'm sure they were Gujarati in their last incarnation. Like one काम हो good गया thing which निकालो. I one good thing which I see now with Chelsea is with this new टेड बोली का नाम has gone under wraps. मतलब अब कम आता है, ये तो लास्ट थोड़ा उसका हाइप कम कर दिया. Hmm. ये तो कुछ भी होता था, इट वाज टेड बोली. अब यू डोंट हियर दैट विद चेल्सी. दे लूज अ विन. आई थिंक उसका कुछ दूसरे ओनर के साथ झगड़ा भी चल रहा था ना, बोथ ऑफ देम वर फाइटिंग इन देयर सेट के इसको थोड़ा इसका मार्केटिंग कम करो. I think No idea. they've only lost one match this season, right? So far, Yeah. No. Chelsea. Two. Yeah. Which was the other one? Next Liverpool and weekend it will be Oh, 3. right. Liverpool. I'm ये happy. ऐसी गंदी बातें करते हैं ना यूनाइटेड फैंस, फिर लाफा Yeah, मारते हैं. I know. I hear that. Yeah, he shared a post yesterday, and he's talking just like that person. There's a guy called, what's his name, Trey or something on Twitter. Like, Akash literally real life में ऐसे बात करता है, but he makes fun of that guy. भाई आकाश could be like Indian version of वसे भाई, अरे मैनचेस्टर नो यूनाइटेड के मैन, लिए. मैं ऐसे से बीच बीच में Oh, बकवास करता हूँ. Indian version of कीप माय माइंड सेट. अभी मेरे को प्रेडिक्शन Yeah. प्रिडिक्ट करूंगा तब आई प्रिडिक्ट यूनाइटेड टू लूज ओनली. Lose, yeah. We predict United to win, but in fact, we had predicted them to win this match as well. आई हैड प्रिडिक्टेड अ ड्रॉ. Draw. एक We गोल मार देता predicted it. यूनाइटेड, कहीं तो मेरा प्रॉफिट होता. मेरा तो ये आई थिंक दिस डे आई स्टार्टेड बैड बिकॉज आर्सेनल चेल्सी वाले मैच में क्यों मैंने मूर्खामी की एंड आई प्रेडिक्टेड न्यूकासल टू विन. I know. I saw. I was like, नहीं, a draw. I could have understood. तीनों गोल सेट पीसेस हुए ना, ऑल द 3 गोल्स वर सेट पीसेस. No. नहीं. पहला वाला नहीं The था, first one, पहला Saka वाला वाला set वो piece ball था ना, नहीं हाँ, वो बेन वाइट ने पहला from किया. White, वाला set Ben piece White, था. Ben White. But you see Liverpool coming back into this game. Oh yeah, definitely. I just think we'll score one more as well. By the way, this I is don't also think like so. a proper big match for first big match for Liverpool, right?
हाँ I think the मतलब Chelsea match was quite हाँ tough as well उसको for भी them. कंसिडर कर Yeah, सकते that हैं. was also tough for them. And I think Chelsea more than Liverpool were responsible for that result. That's how I feel. Because I think Agreed, Chelsea agreed. could have gotten a draw. Yeah, Chelsea was really bad. Missed a lot of chances in that so match. Hmm. what was the scoreline of Chelsea Liverpool? 2-1 2-1, I think. Liverpool. Oh, okay. It was a 2-1 very That good Liverpool. match. I think sense, one of the so best PL taking matches this season. so taking that on face value, I can gladly say we are going to lose the next one. So What's the confirm. next one for United? Chelsea? Chelsea United. Chelsea United. Next one, the fun part would be कि अगर ये बंदा injured है, this guy, क्या नाम है इसका? Maguire. How do you pronounce him? If he's Masri. injured, right, Hmm. you play again, you go back to अपने दादाजी Johnny Evans, right, and then left again. Martinez is a decent defender, but does not have pace, right? And if as अब उस दिन सांचो बोला कि भाई आज मैं तुमको औकात दे. Sancho cannot play, by the way, right? He's not sold. Yeah, so Sancho cannot play, thankfully. But उस दिन है ना, they still have so नहीं if you नहीं think वैसा नहीं बोल रहा हूँ. I'm just saying because नहीं तो एक्स यूनाइटेड प्लेयर्स को तो ज्यादा भाई प्यार भी आता है ना अपने. मड्यूकी के पेस के सामने it would be Martinez हाँ ऑफ कोर्स तो वो और दूसरे मड्यूकी एंड पे नेटो की Mudryk पेस and के all they सामने all डालो. will. और अगर जैक्सन है बीच में खेलेगा अगर, इवन इफ मार्टिनेज प्लेस इन द मिडिल, देन ही हैज टू डील विद जैक्सन. ठीक है, और ऐसे स्ट्राइकर्स के आगे इसके 12 ही बजते हैं, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ. डीजे म्यूट पे. और You don't have मिडफील्ड तो to. पूछो ही मत. नहीं, you don't have to deal with Jackson. We'll like कि कुछ है, हो जाएगा. अरे नेक्स्ट मैच में मजा आने वाला है ना. इट हैज टू बी डीजे वर्सेस अस. अरे भाई 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 फुल आतंक. No, nothing versus Akash. हाँ. When do Arsenal and United play? Same team में नहीं रह पाया मैं. Against तो क्या चल. You will have to come next time. आना पड़ेगा तो मजे लेने के लिए. We need. Parth, responding to your question, I don't think I want to know when United faces Arsenal next. सच में. United versus Arsenal is on the worst possible day for me. Oh, is it? It's on his wedding. On the wedding day. हाँ, वही. The day अब before अपने मैच that. भी देखेंगे, उसकी शादी भी देखेंगे. नहीं, बाजू में. अरे It's we'll a ask. day before that. It's a day before that. अच्छा, अरे day तो no before worries. that. We will instead of Akash's ex doing Channa Mereya, हम वो मैच लगा देंगे, मैच के highlight. Provided that United lose. अरे परफेक्ट सेटिंग. जिस दिन पार्टी है उसी दिन पार्टी है. Come on यार, Arsenal lose यार. What is this यार? Do your neighbor a favor यार. Parth, come on man. We gave you Havertz. Come on. You will win Champions League. referees will make sure we win. Yes, come on referees. Yeah. Why I'm saying that is then City will stay on top. So referees will make sure we'll win. Yeah, City will stay on top, and my claim that Manchester United will be 15 points behind league leaders after 10 games will also be true. But it would be a very interesting half hour with Liverpool जिस intensity से at least they have entered the ground and everything. Yeah. But I think Chelsea ने Arsenal ने wingers को बहुत अच्छे से रोका हुआ है. They have not let both of them make much impact so far. Yeah, Salah or Diaz. Because And you have to look at it from the perspective कि वो दोनों के दोनों they are not trying to come too far ahead. Neither Partey, neither this guy. Left side में कौन खेल रहा है? Timber sir. Right, and both of them are naturally center mid players. Like दोनों में से तुम्हारा वो एक प्लेयर था ना टी से क्या नाम था? He was also like a winger only, right back. Tierney. क्या He's वो injured. He's injured. अच्छा. Scottish prone. left back ना? Scottish. Yeah. Kieran Tierney, something like that. Yeah. Left back, yeah. I really like him. I think he's a good backup for any team. And left back में ये तो लिवरपूल का सबको एलिसन का है. injured for He's I think probably for the out season. for the season. Yeah, For for the the हाँ, season. season. उसको ACL हुआ है ना मोस्टली. नहीं, तो hamstring है. ओ भाई Hamstring, but hamstring उसका injuries. ऑपरेशन होने वाला है शायद अब. Yeah, he's very injury prone यार, very injury. Bye. ये कैसे भागा Yeah. लीजिए उसके पीछे. So hamstring की बहुत बहुत ही एक अच्छी कहानी है मेरी.
every time I try to book my tickets to Chicago, and the next day I like मैंने समझो कि आज अगर शिकागो की टिकट बुक की एंड फिर मैं फुटबॉल या क्रिकेट खेलने जाऊँ, इट हैज ऑलवेज हैपन कि मेरा हैमस्ट्रिंग इंजरी हुआ है येलो हमेशा। किसको मिला? Nunez, Hello, Nunez. Nunez, Nunu. Come on, मेरे man. को पसंद है, पता है, I I don't, mean, मतलब he misses a lot, but वो I mean, chance so today on our stream we have used Ghanta, we have literally badmouthed Messi, and I thought just when we could not go more down, he said no more live stream. I mean, I'm like, but yeah, I feel happy when I look at Nunes because we have Jackson. लास्ट मैच का एक बहुत फनी इंसिडेंस है। तो लाइनअप गेम, ठीक है, everyone is like, oh, United is playing five at the back. हाई बन गया फुल, ओ टेन हैग प्लेइंग फाइव एट द बैक। और ये फुटबॉल पंडित्स, चैनल्स, सब पेजेस, दे आर गोइंग विद दिस थियरी, ओ टेन हैग मास्टर क्लास, ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल पेप, सॉरी मोरिनो, ये क्या है उनका स्ट्राइकर हाइट वाला, जेको, जेको को कवर करने के लिए, एंड द विंगर्स टू मैक्सिमा, सेंट मैक्सिमा चला गया ना, सो उसकी पेस कवर करने के लिए। So all this theory is going on कि Dallo is playing right back and this fellow is playing left back, and full vibes चालू है मार्केट में, full धमाल बच रहा है कि okay, this is going to happen, this is going to happen. Cut short, मैच स्टार्ट होने से पहले टकले बाबा आते हैं एंड बाबा बाबा बोलते हैं कि भाई उसको हम 10 पे खिला रहे हैं, ठीक है, बिकॉज मैं उसको एक्स के दिनों से जानता हूँ। एंड आफ्टर दैट एक बंदा था, ठीक है, so there was this guy I was watching his podcast, I was watching, ठीक है, उस पे किसी ने आके चैट पे लिखा कि ऐसा है, उसने उसको दो गाली दिया, बोले तुम पागल हो, मतलब गंदे गंदे गाली, अरे क्या तुम ये वो व्हाट आर यू टॉकिंग, ऐसा थोड़ी होता है। वो बोला क्या, टेन हैग ने बोला क्या तुम कुछ भी बोलोगे, तो उस बाद में वो बंदा लाया, ही पुट अ क्लिपिंग कि भाई, ही पुट इट अंडर कोट्स ऑफ टेन हैग ओनली, कि ये देखिए टेन हैग के कोट्स, द शिट दैट गाय लॉस्ट, भाई साहब, मतलब he completely lost faith, बोले भाई अब तो मुझे भरोसा ही नहीं है, I have no trust with this manager, मतलब if he is saying this that he played in Ajax, तो ये फड़वा लो वो फड़वा लो, he went berserk कि ये क्या कर रहा है, मतलब, and after the match he couldn't say a word. So He's when what? He's a right back or what is he? He's He's a a Yeah, right right he's a back. right back playing at camp. He was playing at camp Fenerbahce के सामने. so Wow. when मतलब yesterday, मैजरूई नहीं, not yesterday, हाँ एक एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट, मतलब हाँ मैजरूई बोलो। ऐसा राइट बैक है हु प्रोवाइड्स जीरो क्रिएटिविटी एंड उसको ऐसी जगह पे रखा हुआ है दैट रिक्वायर्स 100% क्रिएटिविटी। Wow, जस्ट Marcus. सेइंग। Yeah, just when you, it's about placing zeros at the right places. अरे the worst part is the player post match, the player is going out and saying that as growing up, I have played in different positions. I have played as a left winger, so I have understanding of all the places of all the positions in football. That Wow. is the statement he made. मतलब भाई कल तक तेरे लिए respect थी मुझे because you're playing decently at right back. You're a good player. ये बोल के तूने बता दिया भाई तू you come from Ten Hag school. That's So like when us, that's like us saying that we have seen a lot of tall buildings, we know architecture. And what is this? बट सच में मतलब दिस इज, ये जो डच फुटबॉल यू नो पीपल गो क्रेजी अबाउट दिस डच फुटबॉल शिट, एंड ये नमूने आते हैं, देन यू रियलाइज कि डच नेदरलैंड्स व्हाई डोंट दे लास्ट लॉन्गर इन द कप्स कॉम्पिटिशंस एंड एवरीथिंग, राइट, सो Thanks मेनी, for clarifying. हाँ, Thanks for clarifying. You meant club cups and all. they only got popular because of Cruyff and Bergkamp. वो Yeah, दो total players के football. लिए they were like, oh yeah, yeah. But After that, Netherlands का that one match against Spain where Percy scored that वो great header. Flying हाँ, header. वो match I रॉबिन can भाई never क्या forget. क्या खेला था, and that was a Spain which was unbeatable in many senses. वो गेम तो खुन्नस में खेला था, वो जो फाइनल्स आ रहे थे ना, वर्ल्ड कप फाइनल्स, वो उसका लाइक बदला ले रहे हो ना ऐसा। Oh, oh, Diaz. भाई भाई व्हाट इज Did ही this? मैन, व्हाट Oh, इज ही, yaar. येलो दे दो, चलो Oi, oi, डियाज को, oi, oi, oi. डियाज को What a येलो दो, run, येलो येलो man. येलो। What a येलो run. किस बात का हाँ भाई? अरे मेरे कीपर को इंजर कर दिया। What a अरे run, माइनस man. पॉइंट मिलते हैं उसके
खा येलो गया में। भाई, डियाज खा गया यार, व्हाट अ रन। मैंने उफ, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो डियाज नहीं है, चलेगा। कम ऑन यार, एक बीच में डाल देता ना एक दैट एक टच यार, उसका थोड़ा वो चला गया दूर। या हाँ भाई ये दैट्स हैपेंड। ऐसा भी विंगर होता है। मुड्रिक को नहीं देखा क्या खेलते हुए? या if you वो मुड्रिक को नहीं देखा कि कभी माउंट खेलते का, हुए? क्या मुड्रिक खेलता थोड़ी है, मुड्रिक उड़ता है भाई, मतलब एक भाई बार लेकिन बॉल। उड़ता तो है। उसका पहला हाँ मैच मैंने देखा था, आई स्टिल रिमेम्बर दैट रन। ऐसा लिटरली ऐसा लगा जो अपने रात को एक्टिवा लेके निकलते हैं और कुत्ते भागते हैं ना। हाँ, वो वैसा ही, वो बॉल कहीं और वो भागेगा वो भाई। कहीं और, मतलब वो जो फीलिंग आती है ना कई बार कि हाँ रोक देता हूँ भाई, तू चलाएगा क्या मेरी हाँ, गाड़ी, ही वो यही होता है। इज लाइक दिस, मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मुड्रिक अपनी सक्सेस के भी आगे भाग चुका है, अरे भाई इसके लिए वो मुड्रिक, कुछ तो दे नहीं पा रहा है बॉल। when you are watching Mudrik, he has already played that match, ओ so ओ you are ओ watching ओ him in ओ yeah, ओ come on यार, come नहीं on नहीं है। यार, come on साला, come on। मैंने बोला था कि इस बार बत्ती बुझाएंगे भाई। उसने डियाज ने बत्ती बुझाई रखी है भाई उसकी। ओए come गेब्रियल on यार। गेब्रियल तीसरी बार लेट गया भाई। Oh, He's just तो बाय come द back वे, right from there's a injury. second goal, there is a second goal has to be there यार, come on यार, come on, this has to go to 2-2। नहीं, now Liverpool are going to win, वो तो अभी बाय द वे, फिक्स है। स्कोर अपडेट गाइस। सीरिया में इंटर यूए चल रहा है। सो इंटर वाज ट्रेलिंग 2-1, अभी 3-2 लीड में आ गया एंड दिस इज जस्ट फर्स्ट हाफ। 3-2। ओह So What is nice. Inter UA? What is Inter So UA? why are we watching this match? थियागो थियागो मोटा कोच है ना अभी उनका। या Come on यार। Juventus का। अच्छा, इंटर यूवेंटस, ओके ओके ओके। हाँ, इंटर का भी इफ कोई नया गैब्रियल, कोच है। इंटर का कोच कौन है? या Hey, गैब्रियल इज Spurs गोइंग lost. ऑफ। हाँ, Spurs lost 1-0. दे डिड। Yeah, Spurs lost 1-0. अरे और आज ही यार, हमको हारना था। सी All बकवास में वीक। जो भी हमारे ऊपर है, they have all drop points this week, और हम माशा भगवान की दया से हम भी जाके वही करके आए। सिटी तो सिटी स्टर्लिंग वॉन, सिटी वॉन। स्टर्लिंग क्या चीज है भाई, कैसे बैठा है। यस चलो। नाउ But Parth, हाँ, you tell me this, पुश what do you इट। think about this antics which Arteta keeps doing, right? जैसे वो लिवरपूल के सामने मैच है तो स्पीकर्स लगा दो। अभी बिफोर द सीजन स्टार्टेड he got this pickpocketers and all of that कि चोरी करो to combine. Do you know about that story? कम ऑन हाँ हाँ यार। हाँ, बट तो ऑनेस्टली आई जस्ट फाइंड देम अम्यूजिंग, आई डोंट रियली केयर नहीं टू वो कॉप। यू विल नेवर वॉक अलोन वाला तो सीरियस था भाई, उसके तो वीडियोस है। नहीं, आई फाइंड इट अम्यूजिंग। मैं मतलब टेनहाग को जज नहीं करता, आर्टेटा को कहाँ से जज कर रहा क्यों नहीं करते हो टेन हाग को जज? आई एम बिकॉज हैप्पी विद। प्लीज बिकॉज डोंट सी बी लाइक अदर यूनाइटेड फैंस। ओ सहानुभूति की गैब्रियल, जरूरत नहीं है गैब्रियल यहाँ। गैब्रियल इज सब्स्टिट्यूटेड। बिकॉज या Adit because इसीलिए लिवरपूल आर गोइंग टू विन। Kira's come to an end, so that's why he doesn't judge. but okay, another United fan like comment. Okay, I think Ten Hag is much better than Wenger. यस Even यस, ये वाला माल अपन को भी चाहिए। ये माल से याद आया, एक बंदे ने बहुत मस्त लिखा था। बोले इसके घर जाओ, टेना के घर जाओ, ये एम्स्टरडेम जाता है हर हफ्ते, माल फूक के आता है। सच में यार। और बोले फिर यहाँ पे आके बातें करता है। बोले अब तो लगता है इसने इंग्लैंड में ही खेती कर ली है। हाँ, Gabriel was just back now. Or नहीं No, नहीं, no, 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 no. He was not I injured. think it was Saliba who got the red. He got the red. सलीबा को So red। we'll ऑन have him यार, back next week. But I absolutely। hopefully, I really hope the Gabriel's not out next week. Who's Arsenal playing next week? But Let me check, man. what is this यार, come on यार। क्या फैंडम है यार ये, दिस इज नॉट द सोशल पंडितरी वी एक्सपेक्ट। See, यार you just should at one, least know whom you are going to win against, right? हमारा ऐसा है कि Newcastle. we know We whom have we are going to Newcastle. lose against. लूज अगेंस्ट। Yes. We play at St. James's Park. So tough match. मतलब it will be यार। the level Arsenal wants to compete and what the dream Arteta is sold, उसके बाद it should not be. Especially how Newcastle has played this season. मतलब Chelsea भी No, उन no. I लोग के mean, it's सामने just जीत out of respect. Yeah, out of respect. I think Newcastle is tough away. I ये mean, पागल City था क्या couldn't win. रॉबर्टसन, व्हाट वाज ही डूइंग?
They On. full went to counter attacking football है, कुछ भी बॉल डाल रहे हैं अभी लिवरपूल आगे. लिटरली लास्ट वाला तो क्या था? Oh. Nice, nice. नूनियस राइट विंग खेल रहा है और साला बीच में खेल रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? बट I आगे think का Nunes is just कहीं पे भी जा रहा है वो. Oh, इसके बाद मतलब बाद के बाद वाला वीक that is 10th November it is Chelsea versus Arsenal. Back to back we Yeah. have matches against each other. Yeah. Nice. Chelsea का tough time है. I know. अरे भागा. चेल्सी का टफ टाइम साला can still run, man. यूनाइटेड फेस I mean tough weeks. Tough weeks ahead. यूनाइटेड फेस कर रहा है, टफ कहाँ से होगा? ए साला राजकोट का बुद्धि लेके आया है आज. ऑफसाइड. वे ऑफसाइड ही तो दिख रहा है, यहाँ से भी इसमें दिख रहा है. साला का क्या Offside. गलती था? उसका गलती था. अरे बट साला ने पास भी बहुत गंदा किया था. That was not a good पीछे pass. किया ना उसके. It was behind हाँ. him. And he had all the time in the It world. was not off. It was not off. अरे बट ऑफ हाँ. नहीं ऑफ था यार. नहीं और off एक नहीं. एक दे एक दिया और चीज but तो नहीं. मतलब उसको पास बुलाया कि तू पास में आ एंड देन फिर उसको दूर डाला है बॉल. I think वो पास से भी ज्यादा वो is like ऑन साइड आ. दैट वाज टिपिकल यूनाइटेड पास. मुझे लगा था ये सेकंड थर्ड सीजन में बहुत बड़ा स्ट्राइकर बन जाएगा, बट ही डिडंट रियली क्लिक. स्टिल डिड नॉट क्लिक. Nunez ना. Nunez. But I still feel he'll do much better in Pep's system. नहीं. Not like Haaland, of course. अरे क्या कंपैरिजन कर रहे थे यार वो लोग. यार, कंपेयरिंग come on. न्यूनेस. यार नूनियस इज सफेद लुकाकू. नहीं. No. Why you are saying Safed Lukaku? नूनियस Come कहाँ on. इतना फिनिश कर? Adit, I'll tell you one thing. We are in India. We will not get screwed, okay? This goes into US, you are gone. What is Safed? I'm sure his wife would disagree. यार इंडियंस बड़े हरामी है, यहाँ के जो पुराने वाले इन लोग ने सिखा के रखा हुआ है अमेरिकन्स को ऊपर से कि भाई सफेद वर्ड मतलब व्हाइट होता है, जामुन बोल दिया तो मतलब निक्का बोल रहे हैं ऐसा. Oh. वहां के इंडियंस नहीं रहे भाई. It's a very They're all sham behavior they do. they are Kamala Harris. They've done the pledge of allegiance. So tell me one thing, Adit, tell me one thing. Like if I say Kamala Harris 3-4 times or who is this Joe Biden 3-4 times, तो FBI आ जाएगा क्या? So I'll tell you a funny story. ठीक है? I had applied for US visa और तब मेरा आदत था कि मैं I'm very politically I'm very active, especially on Twitter and all. ठीक है? तो इलेक्शंस थे तब. Foul. बच गया. And I would go on and I would go and like something Trump said. And then next moment I realized, oh shit, visa apply किया. Wait, let me unlike it. पता चले मेरा Twitter को, because they asked, what are your social profiles, and you have to give your social profile then all, right? That okay, I'm there on Twitter. So I gave everything. मतलब पता चला मॉनिटर कर रहा है, बोले साला ट्रम्प को लाइक करता है. बट एक्चुअली उनका ऐसा है कि as far as it is Guys, let's not which is have very a discussion around this. Let's stay as a football channel and focus on that. यार ये नूनेस का टच इतना खराब क्यों है यार? क्यों मतलब? Why is he like this? तो इसीलिए तो बोला सफेद लुकाकू. But Alex, ये Alexander Arnold, if he was playing with Pep, आज तक ये अभी तक बन चुका होता midfielder. Come on यार, Trent यार. Yeah, 100%. Sorry, what you said? If Arnold was playing for Pep, he would have been a CDM by now. He wouldn't be playing anymore. He would be playing at right back. CDM is not Rodri. John डॉकू जैसा होता फिर उसका भी सिमिलर रोल शायद. Not really, but because अगर वो जॉन स्टोन्स को वहां खिला रहा है तो इसको तो 100% वहां खिलाता. Okay, चलो फर्स्ट पोस्ट पे डील कर दिया इस बार. Come on यार, score यार Liverpool. Come on man. I think Arsenal is seeing this out. We should This not. season, if you guys notice, ये लोग बहुत अच्छा एफर्ट डाल रहे हैं. These people, there's this company called GXR website,
was given contract for La Liga. So the good thing is that they have now started getting Indian content creators to get in touch with La Liga, like match interviews and everything. So there's this one guy who interviewed Kunde just before the Clasico. But it's very, I didn't find the UI very. Yeah, app is pathetic. Yesterday no one could get in. More than 50 billion views. ये कल का जो traffic था, so as per that data, around 50 billion people could, like, views were less. That was a loss, big loss for the company. 50 million is a lot. 50 million. Come on, Martinelli, your favorite team to score against. चलो कुछ करो. Achu. नहीं यार, score नहीं यार. Achu. अगर एक और गोल मार दिया ना, फिर बहुत भयंकर मैच बन जाएगा. Yeah, Liverpool has to score, यार. Come on, And यार. I'm saying if Arsenal scores, Liverpool will go mad. फिर वो लोग, they'll go all out like. But if it would have been their home, they would have gone mad. But abhi to I don't think so. That, like, even right now they're not playing something like very attacking or ऐसा वो लोग जा रहे हैं. नहीं. At least few players are, Akash. Diaz has gone all nuts. But Diaz तो naturally ही वैसा है. Like currently मेरे को लग रहा है वो top 3 ऐसे जा रहा है कि they are pressing fully ऐसा एकदम जाके, but the midfield is not supporting them in that. भाई ये कितना बढ़िया, ये देखा, आर्सेनल वाज गेटिंग प्रेस्ड सो बैडली, मतलब डिफेंस में क्या बढ़िया पार्टी ने बॉल निकाला है. अभी ऐसे सिचुएशन में अगर यूनाइटेड के प्लेयर्स है तो डेफिनेटली हम लोग काउंटर पे गोल खाएंगे. ये देखा, रॉबर्टसन के 12 बज रहे थे, he took him out. Simiskas is in Gakpo. Diaz in. Gakpo is coming. And that Sabji fellow. What is his name? मतलब सारे डच टकले पागल हैं. Simicast is not as good as Robertson in defending. I don't think so. Pace. He got him for the pace. Robertson, I mean, still he'll be playing against Saka. So I don't. Anyway, I think I like Robertson much better. So maybe but it was the pace. Now, वो बार-बार उसको cut करके he was beating him. Robertson was quite slow. Right. And also, Robertson also just came back from injury, na? Oh, I didn't know that. Diaz sub was little weird because he was the only one who was making. He could have just subbed in ये न्यूनेस को उधर निकाल के गैक्पो को उधर डाल देता. कुछ तो होगा उसका thinking. I think, but it is also very वो Diaz थका भी होगा यार. He's non-stop running. Yeah, I think balls डालने के लिए भी. He wants the ball to be spread, and that is where he comes in. I think Gakpo needs to get in the middle. He's a proper, मतलब ऐसा finisher है वो, अच्छा finisher. Needs to get in the middle. फिर ये उसको लेफ्ट में डालेगा ना, नुनियस को लेफ्ट विंग पे. Nice. Come on. डाल दो बीच में डाल दो बॉल डाल दो. अरे ऑफ है. ऐसा ना, वॉच यूनाइटेड का मैच. You watch United का match and you're on the edge of the seat for different reasons. And then you watch this matches. And then you realize अच्छा फुटबॉल अच्छी भी होती है. तो वैनगाल एरा में there was this situation जहाँ पे यूनाइटेड इतना टट्टी खेलता था ना, साइड पास बैक पास खेलता ही नहीं था यार वैनगाल ही वो. Partey has come back really well. Yeah, I used to actually switch my channel after that to Real Madrid. Yes, come on, Havertz, come on. Yes. भाई वैनगाल was so boring. अरे क्या कर रहा है यार ये? आकाश आवाज नहीं आ रही. तो कौन से मिनट पे डीजे? हम लोग थोड़ा पीछे हैं. We are a little behind. 15-20 सेकंड 64-48 as of now. अच्छा हाँ. 30 seconds. मैं बोलूं कि ये अलग लेवल पे क्यों वो एक्साइट हो रहा है? वो हो चुका है. कौन से मैच देख रहे हैं? क्योंकि तू पहले सिंक में था. सबका एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है भाई. किसको येलो दिया वापस? हाँ. टेंशन हो जाता है. राया तो उसको शायद रेड कार्ड का सबसे कम चांस है, तो चलेगा. You never know, 80 मिनट पे राया वापस टाइम पास करने लग जाए. Arsenal has no attempts in the second half. Is that? But पूरा का पूरा Premier League is as good as owned by Arabs now. Oh yeah, they should name him Al Habibi Premier League.
हो जाएगा ना। अभी बार्कलेस का मेंबरशिप कब 2025 में खत्म हो रहा है ना? कब हो रहा है? बार्कलेस तो खत्म हो गया आई थिंक। बार्कलेस तो कब से खत्म हुआ, या प्रीमियर लीग बार्कलेस भी तो नहीं, आता है अभी अभी। कौन सा है? सॉरी। देयर इज नो वन। वो तो मैं सिर्फ प्रीमियर कैडबरी तो लीग था, है। कैडबरी। कैडबरी आया था। हाँ, कुछ तो है अभी, तो उसके बदले आ जाएगा फिर। आई थिंक वीवो और अपो शुड गो। पेटीएम लीग। पेटीएम लीग। विवो विवो ओप्पो भी कर सकता है, दे मेकिंग गुड Yeah, बक्स, व्हाई नॉट? actually, yeah. And Nvidia has a good chance. Nvidia is going Geo for League. them, no? Nvidia is going for United's stadium rights, maybe. Oh, is it? Oh, भाई एक वी आर फॉरगेटिंग वन मोर, जियो। Oh, Geo wave. जियो प्रीमियर लीग। रिलायंस है ना, रिलायंस का इन्वेस्टमेंट किस में है? कौन से क्लब में? आर्सेनल या किसी में तो है उनका सम स्टेक ऑफ इन्वेस्टमेंट। इवन come चेल्सी on. इज करंटली ओन्ड बाय सऊदी ओनली पार्शियली। हाँ, उनका दे उसका बीच में तो आया था कि दे आर काइंड ऑफ इंटरनल जो डीलिंग है, इट इज ऑल विद दिस गाय ओनली, जो न्यूकासल का ओनर है। So, uh, Saudi, yeah. so Parth, this visit Rwanda, right? Ah. If by mistake the W is not printed someday in that jersey. Fun, it's fun. I Not think for that those. day the only person who will be wearing the jersey will be Partey. अरे come on यार, Foul, goal foul, करो foul. यार. चलो foul. दे दिया foul. चलो good. नहीं रे, इसका सर फोड़ा। Oh, high boot, high boot, high boot. That's high boot यार. Hmm. भाई कभी भी मैं हाई बूट देखता हूँ ना, मेरे को सीधा पता है नानी याद आता है कि क्या गंदा रेड कार्ड दिया था रियल मैड्रिड के सामने। भाई वो हाई वो बूट बॉल के अरे अभी बॉल वो ब्रूनो का रेड कार्ड कितना खराब था। डिजर्व करता है वो। भाई ब्रूनो अरे का तो नहीं, क्या दैट गाय हुआ? नीड्स टू बी बैंड फॉर दिस सीजन। he didn't भाई, even वो touch the ball, touch the player. भाई Yeah, खाली उसका खाली उसका फेस रेड होना चाहिए भाई। he actually this was actually ball मारा था उसने, ball लगी. हाँ, बॉल लगा उसको, इट वाज हाँ, नॉट ball दे, लगा. फेस नहीं हुई। हाँ। This is okay. I mean, दूर से रेफरी high boot दिखा हुआ. रेफरी फेवरिंग आर्सेनल, नथिंग न्यू। No, you're talking about मतलब the यूनाइटेड Bruno फैंस की one. ऑडेसिटी का जवाब नहीं। हाँ, मतलब दे हैव द करेज टू राइट कि भाई इफ एथ गोस इज जिदान अवेलेबल। भाई जिदान की बात कर रहे हो तुम क्या? पड़ोस की काम वाली की बात थोड़ी चल रही है, मेरी काम वाली नहीं आई, वो आएगी क्या? मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग डूड? Come on, औकात Havertz. तो Come on. देखो भाई अपनी। Nice ball, nice ball. अरे नूनेज को दे रहा है यार ये सब. Oh, good. चलो 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 चलो. I think we should Gabriel Jesus को लाना चाहिए. मैं Jesus, पूछने ही sorry. वाला था, Jesus मतलब या जीसस Jesus? जिंदा है कि अभी मर गई? Yeah, bench. Don't bring on Sterling. अभी अरे उसको लेके आओ. अरे टॉकिंग अबाउट द प्लेयर। अरे डालना यार, क्रॉस डालना यार. व्हाट द हेल यार डूड। मुझे मुझे ना एक एक चीज अभी रियलाइज हुई है, और वो चीज ये है कि आई लुक्ड एट द क्लॉक एंड इट स्टिल सेज इट्स जस्ट 69 मिनट्स। तो 69 मिनट्स में इतना सारा एक्शन देख लिया है, तो यूनाइटेड की गेम देखने के बाद ना मेरे को ऐसा वो ट्रॉ कि भाई इतना ही टाइम गया है अभी तक, एग्जैक्टली, हमारा तो मतलब इतने में जो गेम खत्म हो जाता। ट्रॉमा जोन बोल रहा था ना, अभी मैं वही देख रहा था। आई वाज जस्ट लुकिंग एट, मतलब ग्लिम्पसेस सोच रहा था यूनाइटेड मैचेस के, एंड द होल ग्लिम्स वाज कि अपना पूरा डिफेंस खड़ा है ऐसे हिस्से में, पांच छह लोग ऐसे दीवार बन के, भाई इधर से ना निकल जाए, भाई इधर से ना निकल जाए, कहीं से निकल। दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग, दैट एवरीवन वाज जस्ट ट्राइंग टू नॉक। एंड लुक, इफ यू लुक एट देम, दैट दिस इज व्हाट, मतलब एज ऑफ नाउ यूनाइटेड फुटबॉल इंडियन फुटबॉल से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। I mean, one thing good Liverpool have done is they have strangled Arsenal yeah, so far. या They ट्रू। have not been able. सेकंड Arsenal have हाफ not दे हैव not नॉट लेट देम tested. प्ले। Yeah, they're not And letting them डिफेंस, play at बट all. डिफेंसिवली बोथ but ऑफ देम हैव बीन वेरी गुड। Mm-hmm. yeah, and I think I don't really like the approach, but Arsenal's approach this year has been to shut up shop, which is like I don't know why. We have the Yeah. लास्ट players ईयर to वही था attack. ना, Well, well, लास्ट ईयर गोल्स इतना Last मारे year we but they couldn't scored. close it। हाँ, एक मिनट right, but we एक मिनट exactly, yeah. गाइस, समथिंग कैन हैपन हियर। बच गया। ओनाटे हैज स्पेस मैन। कुछ भी है या आकाश, ये अरे यूनाइटेड फैंस इसको अगर खुश हो जाते हैं ना. क्या किया यार कर्टिस जोन्स यार, ये गधा कहीं का. दिस गाय कैन पता रन है मैन, उसने कितने ओनाटे। अबे कितने वेन गोल डाइक कहाँ मारे. है?
वो ही रहा। See, Arsenal has. I don't नहीं think हाँ Arsenal has reached Liverpool's D even this half. Have they? They नहीं have. भी है Yeah. Yeah. एक या दो बार They're वो strangling. मार्टिनेली अंदर घुस मार्टिनेली गया भी था। लेफ्ट बैक पे ही खेल रहा है फिलहाल। हम्म, Seriously, अरे man. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्टिनेली एंड रैशफोर्ड। हाँ लेफ्ट विंग पे ही खेलता है, ये लेफ्ट बैक पे ही खेलता है। एट लीस्ट ही इज एबल टू कंट्रीब्यूट एनी अदर वे। अंडरस्टैंड कि उसका अभी मेरे को क्या जरूरत है करने का, व्हाट हाँ, माय टीम यू डिमांड्स गाइस राइट। सॉ दैट गोल? क्या विनी का गोल देखा क्या उस दिन वाला, Dortmund अरे वाला. यार डॉर्टमुंड वाला? टिम्बर शुडंट बी इंजर्ड अगेन। भाई वो जो रन मारा है उसने, लाइक यू रनिंग इन द 86 मिनट, एनर्जी कहाँ से आया यार? हाउ डू यू पुल दैट ऑफ? जी इज फाइन आई थिंक। Yeah. तुम लोग स्ट्रीम में आ गए हो, यू गाइस आर अहेड। इज टिम्बर ओके और ही सब इज इज ओके भाई, ओके इज इज ओके। ओके। ओके? हाँ, आई अभी अभी डिडंट वांट टू उसने वेट साला 30 का सेकंड्स फ्रेंच टू किस सी। लिया है, बोला मैं ओके भाई। आर्सेनल के सारे स्पॉन्सर्स ऐसे लगता है कि सारे के सारे स्पॉन्सर्स इंडिया में ज्यादा फेमस है लंदन से। शिवास रीगल। Oh. ओहो नाइस हैवर्ट्स डिफेंडर। भागा मतलब। Havertz Achu. I don't think वो भागा है. पीटर क्राउच और हैवर्ट्स में सिर्फ हाइट का फर्क है, नहीं तो दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। I think that was a bad touch यार. Havertz भागा नहीं था, वो खराब टच हो गया ऐसा. हाँ, मुझे I don't think that. चेल्सी फैन नॉट एबल टू एक्सेप्ट। Yeah. Come on, man. बट नहीं यार, आई डोंट मतलब आई थिंक when at least Chelsea signed him, he was really good player. अग्रीड। हाँ, तो चैंपियंस लीग ऐसे ही थोड़ी जीता है उसने. Come on. नो बट एट द सेम टाइम एक इट अगेन एक हाइलाइट्स तो कि वो हर। अपनी पोजीशन पे खेला नहीं कभी, he was always a cam, it just didn't suit him प्रीमियर लीग में। हम्म। एंड उसके बाद से फिर कुछ मतलब इवन वर्नर वाज अ वेरी गुड प्लेयर यार, Eh, somehow एक ही just चीज didn't करता work था out। वो. क्या ग्लोरीफाइड बोल इट्स वेलेंसिया था वो. वन आर्टेटा के साथ तो मुझे लगता है हावेट्स का वो दुग्गल साहब वाला चलता है। आज दुग्गल साहब लेफ्ट बैक है, आज दुग्गल साहब सेंटर फॉरवर्ड है। अरे लवली यार, who is आज this Konate आज fellow यार. सेंटर मिड खेलेंगे दुग्गल साहब, जहां मर्जी आई कुछ नहीं मिला हावेट्स। ओके ओके, लेट्स फिट हिम हियर। एवरी पोजीशन आई थिंक ही हैज प्लेड फॉर देम एक्सेप्ट फॉर आप सेंटर बैक। Who? गोलकीपर भी नहीं खेला और बट आर्सेनल नीड्स टू साइन अ स्ट्राइकर, नहीं वो लाइक है अ ना. गुड स्ट्राइकर, हालैंड जैसा। बेंजामिन सेस्को। आर्सेनल को इसको ले लेना चाहिए था, पता है ये एटलेटिको मैड्रिड जो गया ना सिटी का, अल्वेरेस, वो अर्जेंटीना। अल्वेरेस, अल्वेरेस। वो हमको देते ही नहीं। अरे यार क्या नहीं, फालतू आई बात. डोंट थिंक सो सिटी कंसिडर्स आर्सेनल एज अ कंपटीशन, नो सो दे नो, बट वुडंट डू अल्वेरेस का रीजन ऑफ गोइंग वाज लव फॉर सिमियोनी, है. इट। अच्छा रियली. अर्जेंटीनियन। Oh, स्लॉट को येलो मिला, किसको. स्लॉट। स्लॉट स्लॉट। स्लॉट। हमारा 10 तो वो भी नहीं ले पाता। काय के लिए. यू वुड हैव बीन लाइक ये रेफरी का येलो था, हम मुझे दे दिया। आई डिड नॉट ये एक्सपेक्ट, ये बंदा काफी फास्ट है यार। कोनाटे इज क्वाइट फास्ट। ही इज क्या वेरी फालतू अरे खेल रहे हैं यार ये लोग. ही इज फास्टर देन वेन डाइक एट समटाइम्स लाइक या which is a big Did he compliment. miss this? अच्छा, okay. बट वेंडाइक का तो वही है ना, दो छलांग मारता है इधर, दो छलांग उधर। तो तो हमारा हमारा एक एक मैनेजर ऐसा था कि एक टाइम पे अगर ऐसे वॉच दिखाता था तो पता चलता था कि इट्स फर्जी टाइम ऐसा। और आज हमारा मैनेजर है जो वॉच दिखाता है तो पता चलता है कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है। ये कौन है, डिफरेंट। निकिता? अच्छा, कौन? निकिता तो चला गया लुइस के लिए। हाँ हाँ या लूज कर इफ दे लूज वो यूथ टीम से है। अब लग सकती है, पता है, इफ नाउ साला कैन मेक अ मिजरी आउट ऑफ That's दिस। why Martinelli is coming back, no? That's why Martinelli is playing this deep. बट गुड गेम, हाँ, मार्टिनेली हैड अ गुड डिफेंसिव गेम। Yeah. Is keeping Liverpool down to one without a Salah goal is not so easy. Especially for us, he always scores against Arsenal. Exactly.
And Arsenal also does not have their favored backline. So उस both scenario में of इतना oh no बिगड़े. wait, Saliba भी नहीं है अभी, Gabriel भी नहीं है. So What do that's you why I राइट expect was बैक from और like, लेफ्ट बैक भी तो वो मतलब उनके फालतू मतलब नॉट योर स्टैंडर्ड लेफ्ट बैक राइट बैक. Oh, Havertz with a world-class attempt. उसने कितना अच्छा अपना करियर रिवाइव कर लिया है. लास्ट आर्सेनल yeah, कैप्टन ग्रैनिट जाका. oh yeah, definitely. He was always a good player. वो बस आर्सेनल के साथ नहीं चला, I think. रॉन्ग. And प्रीमियर लीग वो नॉट गुड फॉर रिलेशन ही बहुत एवरीवन. टॉक्सिक हो गया था फैंस के साथ. नॉट जस्ट दैट ना, प्रीमियर लीग सबको सूट नहीं करता है. Hmm. Last season उसका revival था, and then when he left, it's good for Leverkusen में अच्छा किया, but you saw the friendly against us. Like German league is not nowhere close to Premier League. Come on, man. सिर्फ it's Score only यार. Bayern. वो शिट इसका नहीं गया. किसका नहीं चला गया? Gabriel. Oh. टिम्बर है गैब्रियल है. नहीं गेब्रियल है भाई. Gabriel. Gabriel, अच्छा. टिम्बर यार होता तो बंडस फिर आर्टेटा का I टिम्बर टूट जाता. hopefully उस मतलब it's not that serious because he's ऐसा out there. कैसा जैकेट है यार, एक साइड से रेड एक साइड से ग्रीन, व्हाट इज दिस? विजिट रवांडा. So they people are like, hey, this is support for Palestine. And I was like, no, this सीरियसली? is नहीं. And that's what people thought. Social media यार, वो तो कुछ भी बना देंगे. क्या मेहनत कर रहा है यार. अरे 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 अरे. Come on यार, Liverpool deserve the draw at least. Arteta is nothing, just a cheerleader, man. It's needed, man. Home matches में तो चाहिए अरे ही. अरे 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 अरे, क्या हो जाता है इसको? ओह Some of these guys are just so skillful. मतलब Trossard is amazing. इनको मैं सोचता हूँ अगर यूनाइटेड में ये लोग आते हैं इनको श्राप राप लग जाता है फिर. इट्स सो United. डिप्रेसिंग ना. मतलब यू बीइंग ए यूनाइटेड फैन, एक तो आप अपना मैच देख के डिप्रेस हो, फिर दूसरे का देख के आप सुपर डिप्रेस्ड हो कि भाई हमारे तो लोग मतलब इससे कितना ही गंदा खेल रहे हैं. Come on यार, come on, do something. कुछ तो कर यार, गोल मारना है यार, क्या इधर उधर पास कर पाए, मार दे गोल पे बेंच. ब्रूनो नहीं है वो. But इन लोग ने कुछ like Liverpool have not even made any chance with all the ball they have had this half. कुछ ऐसा ढंग का चांस वांस कुछ नहीं बने. हाँ, फाइनल थर्ड तो में आके वही they are देखना कि faltering. उन लोगों के जो भी चांसेस आए हैं, द ओनली थिंग दे आर ट्राइंग इज ट्राइंग टू क्रॉस द बॉल इन द डी. बाकी देयर इज And नो which अदर is प्ले दे हैव. right. Come on And यार. which is the toughest, one of the toughest things because इट्स मोर Arsenal देन वही टफ. टफ से ज्यादा वो सिर्फ एक एफर्ट है ना. मतलब यू जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग. देयर इज नथिंग, देयर इज नो प्लान और देयर इज नो गारंटी देयर. Hmm. Come on यार, come on. एक तो And बनता they है. don't have taller players than Arsenal, which is like a ट्रू. fact. Yeah. वो जो फर्स्ट गोल भी गया was because फर्स्ट मैन को बीट कर दिया था कॉर्नर पे, अदरवाइज नहीं होता वो. अभी आएगा. अगेन दे विल ट्राई 2-3 थिंग्स. 4-5 बार इधर उधर कुछ करने की कोशिश करेंगे. इवेंचुअली द लास्ट गोल इज कि एक लूप करो बॉल, या तो साला टच करेगा या नूनियस टच करेगा. दैट्स इट. और Salah looking Ah. younger somehow. हाँ बहुत यंग दिख रहा है. ट्रू. इसलिए तुम बोले इसकी वीविंग करवा लिया. क्या करवाया? Weaving. Okay. ओह क्योंकि नहीं लास्ट यार सीजन ही मतलब वाज कंप्लीटली बॉल्ड. Come on यार, नाइस टर्न. मारो यार. मतलब ठीक है अगर स्टैट्स देखने जाए तो 7 shots to 8 shots मतलब इतना कुछ पोजीशन रखने के बाद भी लिवरपूल hasn't That's the managed. thing. I think Arsenal have defended really well and Liverpool यार have strangled them well. I don't know, for some reason. यार मैं वही बोलता हूँ they really defend well in packs. To be very Arsenal honest, this should have been the scoreline of Chelsea वाला match भी. But Chelsea just didn't and as we say, What happened? दे स्कोर. Yes, I'm 5 seconds behind. Oh, come on. साला स्कोर. अरे अबे lovely हाथ से यार, not Nunes यार. मारा. Come on, boy. ऑफसाइड ये है ना? कैसे मार्क नहीं किया साला को यार. Off है. I don't think नहीं so. नहीं नहीं. Off कुछ नहीं है. आया तो नहीं है. Come on, one आदर्श for सबको बोल रहे हैं मैं हूँ.
Come on, yeah, this should not be डिंक off. मैन, सिर्फ डिंक, लाइक वो कब से वही करे जा रहे ये क्या इवेंचुअली कर रहा है भाई? ये मुझे लगा पहला बॉल ऑफ था, बट नहीं है, नहीं है, नहीं वो अरे नहीं है। पहला की मूवमेंट कैसे Very ट्रैक नहीं किया लोग ने? तीन Very तीन nice. बंदे खड़े हैं। नहीं यार, it was a very intelligent run, I think. नहीं, बट Actually, अगेन Yeah. वो तू कितनी देर तक वो पेशेंस Actually. रखेगा ना यार. हाँ, मतलब नहीं, it's I a mean, very good made goal. very good run. I mean, see, the defenders got confused कि बॉल के लिए जाएगा कौन. I हम्म. think the वो mind में they knew कि न्यूनेस जाएगा and Salah will run inside. No one was there, man. They were not. Very well made goal. Yeah, very Very good nice. goal. 3 on आर्टेटा 2. के They were subs 2 on उसके 3. They were 2 आर्टेटा on 3. Still उसके they scored. अगेंस्ट चल गए. 2 on I 3. think Still they scored. So I yeah, also feel this is like a fair result as to how both the teams have played. क्या फेयर रिजल्ट? आपको 3 पॉइंट चाहिए तो क्या कुछ भी बोलोगे क्या? Life is unfair. Football One match. more, one more is coming. Come on, Liverpool. Come on. yeah, I think Liverpool are now favorites. Come on यार, मारो यार, जल्दी जल्दी. नहीं भाई, मेरे को तो नहीं चाहिए लिवरपूल जीते भाई. व्हाई शुड आई वांट टू सी द राइवल क्लब विन द 20th? हाँ, नूनेस मार दो यही से. क्या था? Who is that guy? जेमी वार्डी. Oh, I don't pass. हाँ. मार दे. Gone भाई, gone. अभी आर्सेनल कैन ओनली स्कोर इफ देयर इज अ सेट पीस, ऐसा लगता है. Arsenal has been, मतलब काउंटर पे वो मार्टिनेली निकल रहा है, but again No, but there's मार been nothing on Mane has been Saka's very side. good. एक्चुअली वो बैठ गया. आर्टेटा सैट, उसने पूरा डिफेंसिव अप्रोच ले लिया. ही वाज प्लेइंग सो डीप, कुछ बना ही नहीं. Exactly, yeah. Yeah, we can't sit back. Yeah. पर तुम्हारा पूरा बैकलाइन ही उड़ गया है ना, सो दैट इज अ लिटिल. हाँ, लेकिन स्टिल तू अगर लिवरपूल के सामने बैठने वाला है तो मतलब ये हाँ. वही है कि मुन्ने की But अम्मा I कब think तक खैर नहीं, बनाएंगे. I think दो टी- जैसे as दो Adit टीम्स said, he doesn't have any other option also. क्या करेगा So- और क्या करेगा? वो खेलने जाएगा तो लिवरपूल और काउंटर पे काउंटर करता नहीं रे, रहेगा. फर्स्ट हाफ में वो खेल रहा था तो लिवरपूल की बट भी फर्स्ट फटी हाफ में उन पड़ी. लोगों का बैक भी तो था ना. With Saliba gone, it makes a huge difference for अरे them. सलीबा पहले से ही नहीं था भाई. Saliba नहीं यार, गैब्रियल. गैब्रियल अभी गया, बट इफ यू लुक एट द सेकंड हाफ, ही जस्ट डिसाइडेड कि इस हाफ में मैं बैठने वाला हूँ. आई एम गोइंग Mm-hmm. इन. Hey, that's a foul. Okay. अच्छा. सो टू टीम्स जिसके सामने तुम बैठ नहीं सकते, लाइक ऐसे यू कैंट जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स while defending. That is, one is Liverpool and the other one is Manchester City, कि वो लोग चढ़ के बहुत खेलते हैं. You forgot, man. Biggest team. Against United also. Then you will, or because you will lose the opportunity to win then. If you sit And you back. forgot the biggest club in this. Real Madrid. You can't sit in front of Real Madrid. भाई I मुझे think लगा you can. I think you can. Because they don't have that cut वाला एकदम अंदर. मतलब who can just really make a very good pass. ये आया आया भाई, Jesus आया अभी भाई. Jesus, मैं पहले we should have brought him on early. So Jesus, apart from his striking talents, he has a very special talent. I don't know if you have noticed this. उसके eyebrows ना अंदर से ऐसे ऊपर होते हैं, ऐसे करके देखा. He can do अरे numbers. साका को निकल रहा है. वो Yeah. ईथन को ला रहे हैं ना, Who is Ethan? Ethan Hunt. very Mission something like Impossible. that. Okay. Saka and who left? Havertz. I think so. You know, captain है. You lose. Arsenal will lose. They remove Havertz. This is ये Champions माने mentality player. Saka is captain, yeah, Saka is captain. अरे नहीं Oh. नहीं, जीसस कैप्टन है. मतलब अब Oh. हाँ, so after Saka, Jesus is the captain. सच So में. So हाँ. if अरे Jesus भाई. is मतलब captain, like the club It's captain odd. is Odegaard, हाँ. Saka and Jesus. Yeah, Okay. wow. and Jesus because of his Why not experience, Rice? seniority. Rise above Jesus any day. I would Exactly. think. अभी baptism करेगा Jesus captain है अभी. But Rice is not a vocal player. इसीलिए हाँ, बताया. lovely, yeah. Rice is not so vocal also. But Jesus is vocal, ये भी बड़ी बात है. वोकल तो आकाश को बनाओ कैप्टन भाई. हाँ, एक नंबर. रोहित शर्मा पीछे छूट जाए तो. Like Akash is what I think Akash should be captain of Indian cricket team, standing in slips. Like वो stump mic में एकदम golden एकदम Viral ही हुआ. viral होंगे. अरे भाई एक नंबर. And I should be fielding somewhere there. और 4-5 बार मेरे से बॉल छूटे. धीरे धीरे Oh, by the way, we met the viewers count from the last stream.
Did we? Yeah. Many we went up till 5 also at one point. Oh, nice, yeah. No, like total different unique How? viewers, we have How? 12. On this one? Yeah. Oh wow. Yeah. Okay. And that at 14, na? मतलब ऐसे और व्यूअर्स चाहिए तो 13 मैं or something. यूनाइटेड में डाल दूंगा आ जाएगा अरे, we can use Come as on, many. यार. एक मिनट. Come on. Ethan, चलो. अरे What चल happened? मार Miss. नहीं हुआ. नहीं. Oh, क्या हगा है ये? और Oh. भाई हैवर्ट्स है तो सही पिच पे, हैवर्ट्स होगा निकल. अबे हाँ. This game is on Havertz, but if they lose, it's on Havertz. अरे मैंने डीजे की बात अब भी नोटिस किया वो उसकी हाँ, है ना? आईब्रो Now you can't unsee Yeah. He's so we are worried like this. He's worried in the upwards direction. You know, ऐसा it. normal Jesus है ना वो. It's nailed like that. Unique talent, यार. मेरे को ये अच्छा लगता है ट्रोसैट. गुड प्ले. Nice player. What is this? Why Arsenal call them North London? London तो London होता है. इत्तू सा तो है. North London. अरे How? बहुत बड़ा है यार. What is this, नहीं यार? नहीं. लंडन Very इज अ big, बिग very big. काउंटी. Yeah. Oh. Bye. Goal. Almost. Defend now. Come on, ओ Arsenal, भाई defend for your life. Come on. भाग जा लेके भाग जा. भाग. बैक पास कर, उधर कुछ नहीं है. और बैक पास कर. अपने को यहीं 2-2 पे खत्म करने का है. Come on. यहीं से मार दे. यहीं से मार दे. EPL बैन 2 करो. red cards. बैन EPL बैन मैच अबेंडन. I think the next goal is from Arsenal नहीं, क्यों नहीं चाहिए. हाँ, आर्सेनल से in नहीं. next match. हाँ. अरे यार, ऊपर से देना भाई. ये लोग भी तो पॉइंट ही लेने आए. ए, तेरा क्या प्रिडिक्शन है बे डीजे? 3-2 लिवरपूल. अरे Liverpool भाई 3-2. तो लिवरपूल तो और. अरे मेरे अलग 2 टेंशन है पालने की, मतलब. अरे क्या है व्हाट? ऐसा पास देना होता मैं ही चला जाता अंदर. व्हाट इज दिस? अपने सबका अलग अलग At this prediction है. point, I have 3 points. Yeah. It looks like it will end 2-2. Or I see Yeah, I have Arsenal. Arsenal 3-2. Depends on how much time is added on, but I think a Yeah, lot of time will be added on because of I- 2 injuries. at least Yeah. 25 minutes यार. Come on. No, I think not more than a minute should be तो added. तो सलीबा का रेड कार्ड भी खत्म हो जाए. आओ वापस आओ. ओ भाई, ये ज्यादा ही नहीं टेंशन में आ गया है लिवरपूल का कीपर. क्या है? वे कीपर टू कीपर मैच चल रहा है, लग रहा है ऐसा चल रहा है अभी. लिटरली लास्ट 2 मिनट में मैं जब भी देखा है. चलो. What nonsense. ये राइस विनर मारो चलो. अरे यार राइस यार बैठ जाना भाई. क्या जा रहा है? Do not give to all this Trossard and all यार. They know how to score goals. Give to Havertz. क्या बात कर रहा है. Havertz. Pass it to तेरी Havertz. हैवर्ट्स तेरी टीम में है क्या Havertz. एफपीएल में? Havertz is love. अरे नहीं यार. It's भाई वो his ट्रोल ex. कर ओ, Score. Off. Havertz. Goal. Offside. ओ भाई. क्या अच्छा. किया. ओ Havertz जाके लड़ा ही उसने. एक्चुअली डिड गुड. और फिर एंड में क्या किया. हाँ. ए, थला फॉर अ whistle बजा दिया था. रीजन मिनट्स एडेड. I think the whistle was gone. 7 Yeah. minutes. थला मिनट्स Yes. एडेड. Whistle was gone यार. ये तो any which ways game whistle जा चुका था. Havertz is like हाँ तूने गोल मारा. मैं समझ रहा हूँ. Congratulations. अच्छा, वो फाउल के लिए गया था क्या विसल? हाँ. फाउल तो था यार. फाउल तो था. वो फाउल थोड़ी था. नहीं नहीं the था ना, बहुत ball लेट में ball दिया. ball आई डोंट ball थिंक सो before. यार. No, the ball before Havertz.
The ball before this one, the ball before Havertz. हाँ मतलब जो वही वाला बोल रहा हूँ. हाँ वो हाँ. And even आदित्य तेरा आवाज नहीं आ रहा है. even the other. But I, I, that was not a foul. no, but No, I think he that didn't blew seem the. like a foul. Didn't he It's blew the? not what I want to do, but I think it has to happen. Yeah, see, वो Mark foul दे दिया. Goldbridge on sacking Eric Ten अभी Hag. क्या वो penalty? हाँ. Yes, good. Mark finally has come to his senses. No, he has said this long time back. But now he says like, okay, tell me what is next and all of those things. Which is true. I mean, if you have to have a long-term vision, like what is United going to do? Because who's available? नहीं But he still says available that तो Ten सब Hag is लोग right. Like if you would ask him if he would sack, he would say no. और lovely touch यार साला. देना उसको, देना क्या, गांव जाके बेचेगा क्या क्या बॉल यार, क्या है यार ये? Who is this Endo? हाँ Arey, he's यार. a very good player actually. अरे तो गुड है तो पास करे, क्या करेगा गुड करेगा? What is this? बे यार नहीं चाहिए यार कॉर्नर वॉर्नर. चलो चलो, कॉर्नर से कम ऑन कम ऑन. आह जल्दी जल्दी कॉर्नर लो तो दूसरा कॉर्नर मिलेगा. And my, come on, defend. Use your heights now. I still remember that one game when Manchester United had like 81 crosses in one half or something. Fellaini, Oh. Fellaini Moisira, हाँ. Ashley Young. Wait, Ashley Young. Fellaini signed for you guys that long ago? Moyes का first sign in the transfer window, summer transfer window. He stayed First with and us for only. 5 years. So Fellaini का जो Wow. second half था of his stay with us was better than starting में. Starting में तो he sucked big time. Starting में तो, but you know, I still remember this thing. It was his first match. I think I was traveling, so I could not watch his first match. So it was एक minute, just Fellaini sorry, and Akash. Sorry to interrupt. I just read, but so sorry. Fellaini is only 36. In my Oh. head, I didn't think he signed that long ago. I thought he signed during Mourinho, but I was wrong. नहीं. तो फर्स्ट सीजन की ख्वाहिश जो थी हमारे मोइस भाई साहब की was लिटन बेन्स, क्रूज, लिटन बेन्स, Fabregas. क्रूज, Fabregas, and Bale. And some people say that if Sir Alex wouldn't have resigned, then Bale and Ronaldo were confirmed. Evra mentioned that he had asked 200 million from the club to sign Ronaldo and Bale, and like everything was done, but they refused to give him 200 million. And 2 weeks later, he announced his retirement. So, just another conspiracy over there. 3 minutes to go. Come on यार, someone score यार, draw मत जान दो यार, अब तो draw मत जान. So he joined United in 2013 का season. Yeah. Oh, Yes. Fellaini. Yes. Yeah. And as I Because said, he stayed there for 5 seasons. He left finally in 2018-2019 season. Ole जब आया तब he left. Hmm. Ole के first season में he left because he was a big player for Mourinho too. Mourinho really enjoyed. Mourinho I used think to United talk with fans Pogba, would na? have. I thought you guys would have said when the question was asked, when were you the most happiest after Sir Alex was the Europa win, but you guys didn't mention that. Oh, I thought the time between May and August. winning trophies is always happy, right? Like you cannot compare कि इस सीजन में मैं ज्यादा खुश था, अगले में कम. So winning trophies is fine. No, I mean, Last year FA Cup जीते तब भी मैं बहुत खुश था. of course, Like, yeah. No, but I think that Europa was the biggest trophy after but has I been the understand biggest why one an after, Arsenal yeah. fan would say See, that. sometimes I understand even it. winning trophies backfires, right? And that is exactly what has happened with ETH को इस season. If FA Cup he didn't win, Oh yeah. would have definitely sacked him. Oh, बच गए. Arsenal फालतू Irony में is किया. that same thing happened with Venal. He won it, and Yeah. poor fellow still got sacked.
Yeah, But I think it I is also to do that Mourinho was available. So you had someone better available for the job. नहीं यार, And इसके टाइम पे भी currently, they had available options. ये जो no, सोशल मीडिया का प्रेशर एफए कप के बाद बना, they couldn't take it. If it was still only Glazers or Qatar would have bought us, कतर तो तब तक तो अभी तो साफ हो गया होता आधा he क्लब. would have 100% gone. If Qatar bought us, he would have been dismantled. And I think then definitely either Mourinho would have, Arsenal, yeah, Mourinho would have come back, or either it would have been Nagelsmann. They might have even pursued Zidane with the money. Zidane as well. ये गलत कॉर्नर डिसीजन था. कॉर्नर आर्सेनल का कॉर्नर था. गलत डिसीजन हाँ लिया. इट्स लाइक क्लियर यहाँ से दिख रहा है वीआर में जाओ कॉर्नर में क्या VAR. स्टूपिड रेफरी है, लास्ट में उसका दिख भी रहा है, अच्छा लास्ट में नहीं जाते हुए भी उसका टच है. हाँ वही एग्जैक्टली नहीं इट वाज उसके पहले भी इट वाज हिट टच ओनली. इसलिए तो वो मारने भी गया कि मैं क्लियर कर पाऊँ. चलो What a फुल bad टाइम decision. 2-2 Ah, आकाश यू विन नहीं हुआ ना बेटा फिर. ये हो हो गया. गया. नहीं हो गया हमारा आगे चला गया थोड़ा How many points? I think 7, 9, Yes. 9 points. आई डोंट इवन केयर मैन आई मीन वी शुड हैव हेल्ड ऑन चलो कोई बात नहीं चलो. I don't know. So many people thought that we would lose the match for some reason. I don't know why. Even I thought, yeah, they should have scored. It's like, I thought we were at home. We have to be favorites. But to be honest, I think it was a deserved result for both the teams. Yeah, it was fair result. Yeah. Nothing. लिवरपूल के गोल्स Yeah. भी क्लीन नहीं थे, एंड आर्सेनल सेकंड हाफ आर्सेनल वाज रबिश, सो इन दैट Arsenal did show up in the second Yeah. half. तो उस हिसाब से ठीक था. ठीक था. Exactly. लिवरपूल का And we फर्स्ट हाफ shouldn't. का गोल वाज जस्ट लकी. आई मीन इट वाज नॉट अ वेल I think after City's game we should have changed our approach because City का game में भी we sat back. I know we were in 10 man, but थोड़ा attack करना चाहिए था. Anyway, we are 5 अगर if points Arsenal would behind have City. controlled तो लेवल पे आ जाते, they would have So become 20 to Arsenal 21. is not in top 4 right now. It is Yeah. they're Yes, third. they are. Yeah. Third आ गया. अच्छा. Yeah. नहीं, when the match started, they were not in top 4. Who? No, Arsenal. they were. कहाँ मैच जब स्टार्ट हुआ था तब मैच वो लोग स्टार्ट fifth हुआ पे तब थे. they were not in top 4. He's correct. Really? Chelsea was हाँ. above. Yeah. Yes. Chelsea were above. Yeah. Oh, They were Yeah, 17 and Chelsea was 18. So check. Chelsea was 17. Well, They good were also match. 17, but goal difference पे Chelsea आगे था. Yeah. I mean, not the best match, but not a bad match after watching all that stuff before. come on, man! I got only 4 points. How much this guy got? Yeah. I All right. I think we'll Yeah, end it. guys. Yeah. Yep. Yeah, Thank this you was everyone fun. for joining. Who Yeah. did. Chalo, Yes. yeah. Thanks, guys. Thanks, Bye guys. bye. Bye, See you guys. guys next week. Bye, guys.